कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर काली हाथ, फिरता हूँ खुद को मैं देखो कुछ भी नहीं, मेरा तो ये कुछ नहीं, आया हूँ लेकर काली हाथ, फिरता हूँ खुद को मैं कर में आराधना, कर में आराधना, कर में आराधना, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान, कर में आराधना, कर में आराधना, कर में तूने दी है धड़कने, तूने दी है मैं ये क्या कहूँ, तेरे बिना जी सकूं, सांसें जो तूने दी है धड़कने, तूने दी है घुटनों पर, मैं ये क्या कहूँ, तेरे बिना जी सकूं, कर में आराधना, कर में आराधना, कर में आराधना, आराधना, तो मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, होके बल मैं ये कर देता हूँ यही बार बार,
टेकेंगे, थोड़ा समय परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना करेंगे। परमेश्वर सामर्थ्य दिया है, आराधना के लिए आजादी दिया है, आराधना के लिए तंदुरुस्ती दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देकर थोड़ा समय आत्मा में भरकर आराधना करेंगे। ओहो बड़ा बड़ा दीवार बड़ा जल जल बड़ा बड़ा बेचम दर गड़ बड़ा बेचम दम दल दल दर बड़ा रेडा 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 लो वा तेरे सारे और बीच पकड़ के लिए प्रार्थना 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 प्रभा सारे चटक दाव तेरे सारे प्रभा राज राव डूडल जला रवार डल दल बड़ा बड़ा वार रेडा रेडा राजा रेडा दम दे बड़ा वैशा राजा जल दल बड़ा वार रेडा रेडा दावारा जल दिलीर वशाय दल दल बड़ा वार गल दल बड़ा वार वार रेडा हो वा तेरे गड़ वार 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 पराव कर पर बीच के दार गड़ा वदर बेचर हरे चटक दाव तर बड़े वार जल दल बड़ा वार रेडा रेडा हम तेरी चराव तर बेचर आराधना करते राग मारे वार लो तो कर के लिए तेरे तो प्रार्थना 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 ये दल दलार वार रेडा 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 रेडम हम दल दल बड़ा बड़ा दिवल बड़ा वार वार रेडा 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 जल दलवार लो तो कर पर बीच पकड़ के लिए तेरे तो प्रार्थना वार राजा जल दल ये वार कल दल दरबार जल बड़ा बड्डम दल कड़ बड़ा बच्चम सारे जवानों बराबर घुटने टेके मुंह को प्रार्थना करिए। लो वाद कर के लिए प्रार्थना प्रार्थना राजा राडा राडा रेडा 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 दरवाजे रबारा जल दिल बड़ा बड़ा बार गला दरबार बच्चम दल कड़ बड़ा बम 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 जीवन दरबारा वाचन दरबार लो वाक्य सारे पर बीच बीच के नाम में दम दर दर बड़ा दिवल बड़ा बड़ा बार राडा 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 रेडा राडा लो वार राडा 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 बड़ा 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 बच्चम दल कड़ बम बम चाचल दिल री रा 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 जा रा 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 वाड 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 लो वाद कर वाड दे दर वाड 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 रा जिंदर दिल री रा शा दल दल वा रा वा रा रा जा रा 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 री रा 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 वा रा वा ई दल दल बड़ा बट्टम दल कड़ दर बड़ वा रा रा डाला जल दर वा चूडल बल बड़ दिवाल वा रे रा बड़ बड़ शा रा 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 जी दल दल वा सिर सीधा रखिए जल द्रिवार बड़ 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 बड्डम बम दम जी दल ला रा रा डल दल रा 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 गा रा 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 लो वा रा 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 दिल दल वा रा रा गाव दर बड़ वीरम दार बड़ बड़ वा रा 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 जल द्रिवार रा बम सर्वे चरा देव प्रवार जल दिलार वार गला कौडल बड़ वार गल बड़ बड़ बच्चम बल बदीरम बल विदवम बम 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 दलीला रा जा रा रा जा जा रा गा रा 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 तचारा जी दलवारम शीतल दिलेर वार गा रा रा बड़ बड़ विर बड़ वारा जम्मा रा 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 जा रा आज भी आराधना करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मौका दिया, क्या ये परमेश्वर निवाह करेंगे। क्लाइमेट में उथल पुथल होने के कारण कई जगह में लोग मुसीबत में पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता किया। यहाँ हमारे लिए परमेश्वर अच्छा क्लाइमेट दे दिया है, क्या ये परमेश्वर धन्यवाद देंगे। परमेश्वर दिया हुआ तंदुरुस्ती के लिए परमेश्वर निवाह करेंगे। आज का दिन परमेश्वर का दिन है। यहोवा आराधना, यहोवा की आराधना करना हमारे में सबसे उत्तम बात है। ये परमेश्वर को आराधना करने के लिए आज तन मन लगाकर आराधना करने के लिए परमेश्वर सभी लोगों को दया करने के लिए आज परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर, आज इस सुबह के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आराधना करना हमारे जीवन में सबसे उत्तम विषय है। तू आराधना का योग्य परमेश्वर है। आज हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है,
हम तन मन लगा कर तेरी आराधना कर छुटकारा पाने के लिए तो मैं सहायक परमेश्वर, हमारे जीवन तेरे हाथ में है, हम तेरे हैं परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में अभी तक जिंदा रखा, इसलिए तेरा को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तेरा नाम महिमा होने पाए, तेरे सहायता हमारे जीवन में आज दिन में देकर तुम्हें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आए वह सभी लोगों को तेरा हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, सारे कमजोरी को दूर कर दे। यहोवा के नाम को ऊंचा करने के लिए, उनको मुंह को पसारने के लिए तो दया करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले हैं, हमारे बिंदियों को सुनने वाले परमेश्वर है। आज तेरे समय भाई के साथ बद के साथ बैठकर तेरी आराधना करने के लिए तो मैं दया करने के लिए प्रार्थना करते सहायता कर। मान और महिमा तुले यीशु मसीह के नाम मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। गुजराती में गीत गाए नंबर 92, पेज नंबर 95, 92 पेज नंबर 95। प्रभु देव ना गाओ गान। प्रभु देव ना गाओ गान, गाता न सुनाऊंगा। प्रभु देव ना गाओ गान, गाता न सुनाऊंगा। सम्मानो तेरो अपार, गाओ गायन गाओ गान।
ఉడలబడవార జలజలబడబడబడబడం దలబడబడవ షాజలదలబడబడవారదం ఎందలదిలవార డలదిలవీరవ షైగలదిలబడవార రెడ్డలదిలారవార గలదిలబడబచ్చం దలబడబంబం ప్రాక్ ప్రవేశిలా బేచుగల 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 प्रवेश के लिए निवाह करेंगे पुत्र यीशु के लिए निवाह करेंगे पवित्र आत्मा के लिए निवाह करेंगे विश्व के सारे पवित्र लोग के लिए निवाह करेंगे इंडिया के सारे पवित्र लोग के लिए निवाह करेंगे गुजरात के सारे पवित्र लोग के लिए निवाह करेंगे कच्छ के सारे बौद्ध लोग के लिए निवाह करेंगे गांधीधाम के सारे बौद्ध लोग के लिए निवाह करेंगे हमारे चर्च के सारे बौद्ध लोग के लिए निवाह करेंगे हमारे पास्टर के लिए निवाह करेंगे साथी सेवकों के लिए निवाह करेंगे ब्रांच मंडलों के विश्वास का प्रवेश निवाह करेंगे आज के दिन परमेश्वर का है ले प्रवेश की आराधना करने के लिए प्रवेश मां करने के लिए निवाह करेंगे जो लोग नए आए हैं उनके जीवन में भी प्रवेश कार्य करना है कई लोग बोझ के साथ आया है कई लोग दुख के साथ आए हैं निराश के साथ आए हैं ये सभी को बोझ उठाने वाले निराश घटाने वाले केवल यीशु है यीशु से कोई बात असंभव नहीं है उसके जीवन में प्रवेश के वचन विश्वास करने के लिए मन फिरने के लिए यीशु का अंगीकार करने के लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे।
सभी को मुंह खोलना है, प्रार्थना करना है. Everybody should open their mouth and pray. बच्चे भी प्रार्थना करें, सीधा सिर देखो. इस बाजी बटो, इसकी तरफ बढ़ाओ. क्या बोलता हूँ, बाजी बटो. सबका आंख बंद करें. बच्चे आंख बंद नहीं करता है. क्लोज योर आइज मैन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो कोई बीमार में पड़े हैं वे सभी को परमेश्वर चंगाई देने के लिए. आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे. बच्चे भी प्रार्थना करना, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन. यू शुड ऑल्सो प्रे. हिंदी में गीत गाएंगे. 175 पेज नंबर 140, 175 पेज नंबर 140, 175 पेज नंबर 140, स्वर्गीय बुलाहट के लिए. बुला के लिए पहले शुगर लौट रहा. संगिया बुला के लिए पहले शुगर लौट रहा. दौड़ रहा मैं, दौड़ रहा, दौड़ रहा मैं, दौड़ रहा. हंसी के लिए दौड़ रहा, हंसी के लिए
Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. भाइयों के सेट में, बहनों के सेट में कुर्सियां खाली पड़ी है। जिसको कुर्सी में बैठना है आगे आकर बैठ सकता है। पीछे कोई नहीं बैठे, आगे जगह खाली पड़ी है कुर्सी। दोनों सेट में कुर्सियां खाली पड़ी है। जिसको चेयर में बैठना चाहिए तो आगे आकर बैठ सकता है। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टैंड अप। आप दया करके खड़े हो जाइए और दोनों सेट में थोड़ा थोड़ा आगे घिसे। Praise the Lord. Hallelujah. English chorus number 13, page number 38. English chorus number 13, page number 38. I need not ask what time will bring. I need not ask what time will bring, when to my Savior's hands I cling, as song that my soul can sing, for step by step He will lead me, step by step to the glory land, my Savior guides with a loving hand. I know to dwell with the black heart land, and step by step He will lead me, step by
Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, step by step to the glory land. My Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, step by step to the glory land. My Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, step by step, glory, glory land. My Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, step by step to the glory land. My Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, step by step to the glory land. My Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, step by step to the glory land. My Savior God, with the love we have, I go to death with the blood of child, and step by step He will lead me, 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 and step by step He will lead me. इंडिया के भिन्न भिन्न भागों में अनेक मसीह लोग सताया जा रहा है। प्रभु का प्रेम करने का कारण, सच्चाई के लिए कड़ा रहने का कारण अनेक लोग मार खाते रहते हैं। इन अवस्था से परमेश्वर एक परिवर्तन पहुंचाना है। वो लोग विश्वास में अंत तक खड़ा रहना है, परमेश्वर को संरक्षण देना है। इन सारे विषयों को याद करके थोड़ा समय मुंह खोलकर सभी लोग जोर से प्रार्थना करिएगा। धावत और बीच वक्र के लिए प्रार्थना 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 तबीच तरह थारे रावण बीच वक्र के लिए लोहा तो कार्य के लिए तरह प्रार्थना 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 देवादि गुदावत और बीच वक्र के लिए लोहा तो कार्य के लिए तरह प्रार्थना देवा पराकबर बीच तरह देवा दे के लिए बात 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 आदि दरबार गुरु वेद तारे चटक दावत और बीच वक्र के लिए तरह प्रार्थना प्रार्थना लोहा तो कार्य करने वाला गुदावत और बीच हरे चटक दावत और बीच वक्र के लिए प्रार्थना दवा रवा रवा लोहो हाथ सागर के लिए गुलाब इन सारे बारों को प्रवेश दवा कर ले तेरे आका तो के लिए हम दरवेश प्रार्थना तो प्रवेश एक बड़े जोरदार के जीव बेच वजार के लिए प्राक प्रवेश वक्र के लिए तरस प्रार्थना प्रार्थना जीवन दाय कर दे दरबार गोत्र में तेरे आका तो बात के लिए हम दरवेश प्रार्थना बारा डूडल बरबारा डा दिन बरबारा बार बेच बेच के नाम में जीवा दिवदावत और वेच तकरार के लिए गावत वाकर के लिए तरस प्रार्थना जो वेच रेच कर ओ आत कार्य कर के लिए गावत और वेच वाकर के लिए तरस प्रार्थना And we give witness about you, O Lord, all over the country, O Lord, in these days, O Lord. Most loving Father God, O Lord, I thank you for this wonderful opportunity you have given us, O Lord, to come to thy presence and worship you in truth and spirit, O Lord God, Heavenly Father. I thank you, O Lord, for this whole week, O Lord, you have been with us, O Lord God, Heavenly Father. Lord God, Heavenly Father, you have been with us, O Lord, till today, O Lord God, Heavenly Father. Many of us, O Lord, this good opportunity have not got, O Lord, but because of your grace only, O Lord, we are here, O Lord, today, Lord. Lord God, Heavenly Father,
Heal the sick people, O Lord, who came here, O Lord God, Heavenly Father. Through hearing your word, O Lord, let them maybe get healing in their body, O Lord God, Heavenly Father. Whoever came with their, O Lord, problems and difficulties, O Lord, let their problems and difficulties maybe, O Lord, get solved in thy presence, O Lord God, Heavenly Father. I'm praying, O Lord, you are an anointed servant, O Lord. Lord God, Heavenly Father, use him in a mighty way, O Lord. Manifest your powers, O Lord, in our midst, O Lord God, Heavenly Father. O Lord God, Heavenly Father, whatever words we hear, O Lord, help us, O Lord, to obey your word, O Lord God, Heavenly Father. Open our ears, O Lord, that we may hear your voice in the almighty presence, O Lord. Lord God, Heavenly Father, I'm submitting this whole congregation, O Lord, to be attentively to hear thy word and walk according to thy word only, O Lord. In these days, O Lord, when you are, O Lord, help us to come nearer to you, O Lord. Let us, O Lord, bond with you, O Lord, in thy presence, O Lord. In Jesus' most precious name I ask. Amen. Somebody may pray in Hindi also. Somebody may pray in Hindi. K.A. Sudas, हिंदी में प्रार्थना करो. Glory. Hallelujah. Glory. हालेलुया प्रभु जी लोगों से बात कर दे प्रभु जी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को सोने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी तेरा बहुमूल्य दासों का अवकाश में सौंप देते प्रभु जी हालेलुया ग्लोरी जी से जो संदेश चाहिए प्रभु जी हमारा आत्म जीवन के लिए हमारा भौतिक जीवन के लिए हालेलुया दुनिया में हालेलुया कैसे जीना प्रभु जी ऐसा सारे प्रभु जी सच्चाई तेरा दासों को मुखांतर प्रभु जी हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी कई लोग कई प्रश्न का साथ आए प्रभु बीमार का साथ आए हैं कई लोग नया पाए प्रभु जी कई लोग हालेलुया कई समस्या का साथ आए प्रभु जी सारे प्रश्न को उत्तरवाद आप है प्रभु जी हालेलुया ग्लोरी जीसस हालेलुया ये दुनिया में हमको शांति नहीं है ये दुनिया में हमको चंगाई नहीं है प्रभु जी ग्लोरी हालेलुया तेरा सन्मुख में सब कुछ है प्रभु जी हालेलुया आए हर एक व्यक्ति भाई बहन बच्चों के अंदर प्रभु ग्लोरी तेरा प्यार से भर देने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी तेरा चंगाई से भर देने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी तेरा दासों को सामर्थ्य दे दे शक्ति दे दे प्रभु जी हालेलुया आए हुआ कोई भी प्रभु निराश का साथ नहीं जाने के लिए प्रभु जी जो निराश का साथ आए लोग प्रभु आनंद और खुशी का साथ जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी ग्लोरी आया और एक से पवित्र आत्मा हालेलुया बात करने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु प्रार्थना सुना धन्यवाद अनुवाद करने वाले का आपका हाथ में सौंप देते प्रभु स्वस्थ रूप से हम लोग समझने के लिए प्रभु जी तेरे दासों को हालेलुया बलवंत करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी प्रार्थना सुना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के प्रिय नाम से मांगता और कबूल कर रहे हैं प्रभु जी Lift your eyes. आपके आंखों को उठाकर Am I a soldier of the cross? A follower of the Lamb? And shall I fear to own his cause? Or blessed to speak his name? In the name, the precious name of him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Whatever my cross may be, must I be carried to the skies on flowery beds of ease, while others fought to win the prize and swing through bloody sea. In the name, the precious name of him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Whatever my cross may be, not there nor forced from me to flee. Must I not share the flame?
In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Water my cross may be. Since I must fight if I would reign, increase my courage, Lord. I bear the toil, endure the pain, supported by the Lord. In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Water my cross may be. Are there no foes for me to face? Must I not serve the flesh? Is this one word your friend to grace? To help me on to God. In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Water my cross may be. Since I must fight if I would reign, increase my courage, Lord. I'll bear the toil, endure the pain, supported by thy word. In the name, the precious name of Him who died for me. Through grace I'll win the promised crown. Water my cross may be. Close your eyes. आपको आंखों को बंद करें। We are in a world which is full of education. हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पूरा शिक्षा और पढ़ाई से भरा हुआ है। So many types of education. कितने अलग अलग प्रकार की शिक्षा होता है। The Holy Spirit says through Paul. पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बोलता है। Strict discipline. कठोर अनुशासन। Strict education. कड़ा अनुशासन। There were government schools. सरकारी स्कूलों थे, But the education was not right. लेकिन शिक्षा सही तरीके से नहीं था। Teachers were not prompt. अध्यापकों वो समय पर सब पालन नहीं करते थे Students were not getting right education. और विद्यार्थियों को Close your सही eyes. पढ़ाई नहीं मिलता था। I say, close your eyes. Therefore, इसलिए many convents were started. कई कॉन्वेंट स्कूल शुरू हो गए, Many convent schools. कई कॉन्वेंट स्कूल शुरू हुआ, Many missionary schools. कई मिशनरी स्कूल का शुरुआत हुआ। Lessons were taught properly. अच्छी तरह से पाठ को सिखाया जाता था Teachers were hard-working teachers. और शिक्षकों बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे And the students were brilliant, और बच्चे बहुत होशियार होने लगे, smart, बहुत ही होशियार, very clever. बहुत ही होशियार होने लगे। And when the missionaries started these schools, और जब मिशनरी ने स्कूल का शुरुआत किया the other people also thought, why can't we start schools? और दूसरे लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी स्कूल की शुरुआत करें। But the schools became very costly. लेकिन उन स्कूल बहुत ही कीमती हो गया, बहुत ही महंगा हो गया। But the parents wanted better education. लेकिन माँ बाप को अच्छा स्कूल और अच्छा पढ़ाई चाहिए था, But it's better discipline.
और अच्छा अनुशासन चाहिए था। Though the cost was great, जो भी उसका महंगाई ज्यादा था तो भी they sent their children to the mission schools. उन्होंने अपने बच्चों को मिशन स्कूल में भेजा। I remember मैं मालूम some है rich men in Gandhidham. गांधीधाम के कुछ धनी लोग, They came and asked me, उन्होंने मेरे पास आकर पूछा, Pastor, पास्टर please recommend my son to the Mount Carmel school. मेरे बच्चों को माउंट कार्मेल स्कूल में एडमिशन के लिए आप सिफारिश कीजिए। Please recommend my son for the St. Xavier school. सेंट सेवियर स्कूल में भर्ती के लिए मेरे बच्चों को आप सिफारिश कीजिए। Because the people were impressed. क्योंकि लोग बहुत ही प्रभावित हो गए The थे। discipline of the convent schools was great. कॉन्वेंट स्कूल का डिसिप्लिन तो अनुशासन बहुत ही अच्छा था And the education was high. और उसका पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा था। And at home, children were more disciplined. और घर पे बच्चे अच्छा अनुशासन का पालन करते थे And their career was great. और उनका भविष्य अच्छा हो गया था। Your Bible says आपकी बाइबल में ऐसा कहता है, they go under strict instruction. और वो कड़ा अनुशासन का पालन करते हैं। What is it in your Bible? बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? Bible says strict in English. 1 Corinthians. Everybody can open their Bibles. 1 Corinthians पहला कुरिन्थियो and the 9th chapter उसका 9वां अध्याय and the 25th verse. 9 का 25वां वचन। 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियो, Please, everyone who has a Bible and who can read Bible, please open your Bible and look straight up. Read louder. Read louder. I don't know what your translation says, आपका भाषांतर कैसा है करके मैं नहीं जानता हूँ, but the Bible, my English Bible says, लेकिन मेरा इंग्लिश बाइबल में लिखा है, everyone who competes in the games, हर एक पहलवान जो भाग लेता है, everyone who competes in the games, और हर एक पहलवान जो भाग लेता है, పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు, repeat, పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు, पंदेमंदु, बराबर पढ़ो, मुंह खोल के विशाल करके बोलो, मुंह अच्छा प्रभु इसके लिए वचन पढ़ने के, पंदेमंदु పోరాడు పోరాడు ప్రతివాడు, പ്രതിവാട് മലയാളം അംഗം പൊരുന്നുവാൻ ஒக்கேயும் അംഗം പൊരുന്നവൻ ഒക്കെയും பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் പന്തയത്തിൽ പോരാടുകിற യാവരും. I think the student generation will understand this language. विद्यार्थियों इस युग के विद्यार्थियों इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। I was a student long back. मैं बहुत लंबे समय के पहले एक विद्यार्थी था। I never went for these things. मैं कभी इन विषयों के लिए नहीं गया था। I never went for sports. मैं कभी स्पोर्ट्स में नहीं गया था। Probably you are. आप खेलकूद में जाते होंगे, You know that. आप जानते भी है। There is a day called annual day. Is और it right in the school? आप जानते हैं कि वार्षिक दिन Is it स्कूल में right? होता है। Annual day. स्कूल में वार्षिक दिन होता So है many programs are made there. और उस दिन कई सारे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है One is called sports. और एक है खेलकूद का दिन। I never. लेकिन मैं उसमें कभी भाग नहीं I लिया, never wanted. मैं कभी नहीं गया। I wanted to be a sportsman for something else. और दूसरे कोई विषय के लिए मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहा। From the childhood, it was injected into me by the Holy Spirit. और बचपन से ही पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा इंजेक्शन मैंने प्राप्त कर But I लिया। am teaching you from the worldly point of view. लेकिन मैं इस दुनिया की अर्थ से मैं आपको बताता हूँ, Everyone who competes in the games, हर एक पहलवान जो प्रतियोगिता में भाग लेता है, what does he do? वो क्या करता है? Goes into strict training. वो सब प्रकार का No. Goes into strict training. वो कड़ी प्रशिक्षण से गुजर कर जाता है। అన్ని విషయములందు మితముగా కఠినమైన ట్రైనింగ్, സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കുന്നു. எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமா இருப்பார்கள். Amen. Thank you. You know, great people who are going for sports, बड़े बड़े लोग जो खेलकूद में भाग लेते हैं, they can't take any drugs. वे कोई नशीला पदार्थ सेवन नहीं कर सकते। How many of you know that? आप में से कितने लोग इस विषय को जानते हैं? Oh, beautiful.
So many people know that. When they use drugs, जब वो नशीला पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, their strength increases. उनका बल बढ़ जाता है, Their ability increases. उनकी योग्यता नहीं तो क्षमता भी बढ़ता है। It is unnatural. ये स्वाभाविक नहीं है। Therefore, इसलिए all the experts in sports, they say, जो खेल कूद में बहुत निपुण है वो कहते हैं you can't take drugs. तुम नशीला पदार्थ सेवन नहीं कर सकते हैं। They will be tested. और उनकी परीक्षा होता है, Not only tested, केवल परीक्षा होता है उतना ही नहीं, and they will go training. और उनको प्रशिक्षण भी उनके प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता I है। was in a dancing tuition, मैं एक डांस ट्यूशन में था, institution, इंस्टीट्यूशन में था, Bharatanatyam, भरतनाट्यम, Kathakali, कथकली, Kuchipudi, कुचिपुड़ी and many types of things were taught over there. और ऐसे कई प्रकार के नाच वहां पर होता था। That fellow is laughing. You want me to teach you Kalakshetra? Kathakali? This fellow. You want me to teach you? I can teach you. But I have not learned. But my method of teaching is different. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। I have seen मैंने देखा है Rukmani Devi रुक्मणी देवी was a great artist. वो बड़ी एक आर्टिस्ट थी, She was a trainer. वो अच्छी प्रशिक्षक थी। She will just go and sit there. वो केवल जाकर वहां पर बैठ जाती She थी, will see that everything is done according to the bhavana and other things. और वो हमेशा ये बात को सुनिश्चित करती थी सभी बात एकदम क्रम अनुसार हो रहा है। Her troupe was invited to European American countries. और उनका ग्रुप को वो यूरोपियन और अमेरिका के देशों में उनको बुलाते I am थे। not teaching you now Bharatanatyam. अभी भरतनाट्यम में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, I am teaching you something else from the Bible. मैं कुछ अलग बात बाइबल से सिखाता हूँ। Strict training. कड़ी प्रशिक्षण, Into strict training. और कड़ा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। अब जो बोला मुझे समझ में नहीं कठिन आया। बोलो बराबर। Strict training. कड़ा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। What is that? Hindi? कड़ा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। कठिनమైన శిక్షణ। हाँ। आपको ये भैया बोलते हैं, आपको समझ में आता है? बोलिए, वापस बोलिए। कला प्रशिक्षण, तो इंग्लिश है हिंदी है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल सकते हैं, बाइक में बोलो। கடினமான உழைப்பு உழைப்பல்ல பயிற்சி. Praise the Lord. വർജനം ആ? വർജനം ആചരിക്കണം. ഞാൻ വർജനമല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. I will come to the later. बराबर ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण से गुजरना है। ट्रेनिंग, अच्छी तरीके से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण। वो सुंदरपुरी वाला के समझ में नहीं आएगा। कल वो भी नहीं आया, उनका बड़ा लंबा लड़का नहीं आया प्रेयर मीटिंग में। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और कठिन परिश्रम से, प्रशिक्षण से, परिश्रम नहीं, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण से। सब लोग बोलो आपकी भाषा में। कठिनమైన That word strict is there. वहां स्ट्रिक्ट करके लिखा हुआ है। In English, strict is there. Open your mouth, man. Strict. स्ट्रिक्ट, Strict. बहुत ही कठोर, वर्गी संगली, no, कठोर नहीं बेटा। कठिन। Praise God. वर्गी संगली is very strict. वर्गीय संकल्प बहुत स्ट्रिक्ट है। And Matthew Angle is also becoming very strict. मैथ्यू एंगल भी स्ट्रिक्ट है। What to say about this pastor? पास्टर के बारे में क्या बोलना है? Praise the Lord. Strict. कड़क है। You are going to inherit everlasting life. आप अनंत जीवन पाने वाले हैं। You are going to reign with Christ Jesus. आप यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाले It हैं। is your call. यही आपका बुलाहट है। It is the destiny. It is what God desires about you. और परमेश्वर आपके बारे में यही चाहता है। So in order to go to that place, और उस स्थान में पहुंचने के लिए you have to go under strict training. और आपको इस प्रकार से कड़क प्रशिक्षण से गुजरना है। I am now turning to the Malayalam translation. अभी मलयालम भाषांतर की ओर मैं आ रहा हूं। Varjanam, praise the Lord. We have to reject so many things. कई विषयों को इनकार करना पड़ेगा। We have to Varjanam. Is that right? Many things we have to we have to resist and we have to reject.
कई चीजों के लिए मना और उसको त्यागना पड़ेगा। That's why we say इसलिए हम बोलते हैं we can't drink, हम पी नहीं सकते हैं, we can't dance. हम नाच नहीं सकते हैं। You understand that? We can't drink, हमें नाचना नहीं है, we can't dance, हमें पीना नहीं है, we can't dress like other people. और दूसरों के समान हम वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। We have to follow Christ Jesus. हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। He is our captain. वही हमारा नेता है, He is our captain. वही हमारा कप्तान है, He is our captain. वही हमारा कप्तान है। As the captain goes, जैसे कप्तान आगे बढ़ता है the soldier follows Christ Jesus. और सैनिक यीशु मसीह का पीछा करना What चाहिए। a beautiful word it is. बहुत ही सुंदर एक शब्द है। We do it to get a crown that will last forever. और हम उस मुकुट की बाट जोते हैं जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। We do this strictness in order that we may get a crown that will last forever. और ऐसे मुकुट के लिए हम बाट जोते उसके लिए परिश्रम करते हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। In the name, the precious name of Him who died for me. All of you raise your voice and sing. നല്ല പൊരുതു ഞാൻ ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ ധീരമായി പോരാടുവോ യേശുവിൻ ബലത്തിൽ വാഴാ കിരീടം പെറുവേ In the name everyone to die for me. We have been in the past studying about Abraham and his grandson, great grandson Joseph. हम बहुत दिनों से इब्राहिम के बारे में और उसका पोता के बारे में, यूसुफ के बारे में पढ़ रहे थे। Many of you are absenting from that meetings. और उन मीटिंग में आप में से कई लोग यहाँ पर आए नहीं थे। Nevertheless, we are continuing our study. फिर भी हमारी इस पढ़ाई को हम जारी रखते हैं। Sam, you are not listening. Abraham, we have studied. इब्राहिम के बारे में हमने पढ़ा, A bit of Isaac, we have studied. थोड़ा हमने इसहाक के बारे में पढ़ा, And we have studied a bit of Jacob. और याकूब के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, And we have also studied something about Joseph. और यूसुफ के बारे में भी कुछ हमने पढ़ा। What did the word of God speak to you? इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन ने आपसे क्या बातचीत From किया? every one of these great men of God, ये सभी परमेश्वर के महान लोगों में से we have to something to study. हमको उसमें से कुछ सीखने के लिए है, And we have to copy in our life. और हमारे जीवन में उसको अनुकरण करना और नकल करना It is है। easier for us to copy these men और इनको अनुकरण करना हमारे लिए बहुत ही आसान है than copying Christ Jesus. यीशु मसीह के नकल करने से भी। Our ultimate goal. हमारा अंतिम उद्देश्य ये है। Yesterday we studied in from our Song of Songs. हमने कल श्रेष्ठ गीत में से पढ़ा था। What is that thing? क्या लिखा था उसमें? Book of a Song of Songs we studied that. What is that? What is that? I want to tell everyone who is right now present here in the church. मैं सभी लोगों से जो यहाँ पर आज मौजूद उनसे कहने के लिए चाहता हूँ, My master wants to tell you, मेरा स्वामी आपसे कहने के लिए चाहता है, Christian life is not something religious. और मसीह जीवन कुछ ऐसे ही ये दुनिया के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं है, Something more than that. उससे भी बढ़कर है। You ought to come.
आपको आना पड़ेगा। Madam, you are to come to the stage. मैडम, आपको उस अवस्था में आना पड़ेगा। He won't tolerate your excuses for a long time. आपके बहानों को ज्यादा समय तक वो सहन नहीं कर It is पाएगा। better that these boys begin to say these things from this age on. और इसलिए इन लड़कों इसी उम्र में से ये बोलने के लिए शुरुआत कर दे। What is that? और वो क्या है? No, yesterday we didn't read that. कल हमने नहीं पढ़ा। Yesterday we didn't read that, Mr. Abraham, you are forgetting. Yesterday we read that. What is that chapter? What is that chapter? 2:16. It is not here there. Where is it? 2:16. He is mine and I am his. He is mine. He. The Old Testament Jews were telling that Jehovah is theirs and they belong to Jehovah. पुराने नियम के यहूदी लोग कहते थे कि यहोवा हमारा है। In the New Testament, we Christians say, और नए नियम में हम मसीह लोग कहते हैं। where is that man? You are not putting there. Which is that word? He is mine. वो मेरा है। Which one? 2:16. And this man is putting 2:16. Yesterday we read some other word. Huh? कल क्या पढ़ा था? हाँ? 3:1 first portion. There is one word, he is mine, yesterday. Huh? 2:16 में he is mine नहीं लिखा है. My lover is mine. I didn't read that. Yeah? This is KJV? नहीं, He is mine. वो मेरा है। In your language, please say that. आपकी भाषा में बोलिए। Will you please open your mouth? आपके मुंह को खोल के बोलिए। In the Old Testament, पुराने नियम में the Jews said, यहूदी लोग बोला करते थे Jehovah is mine. यहोवा मेरा है। In the New Testament, और नया नियम में we say, हम बोलते हैं Jesus is mine. यीशु मेरा है। Open your mouth. आपकी भाषा में आप बोलो। యేసు నావాడు Jesus is mine. यीशु मेरा है। Jesus is mine. यीशु मेरा है। And then, whom do you belong? నేను Whom do you belong? आप किसके हो? Open your mouth and say louder. Whom do you belong? आप किसके हो? Whom do you belong? आप किसके हो? It's a challenge for you. ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। You are supposed to grow to this standard of Christian life. आप मसीह जीवन का इस दर्जा तक पहुंच जाना चाहिए। You have to grow. You have to grow. आपको बढ़ना चाहिए। Gentlemen, you have to grow. आपको बढ़ना पड़ेगा। Ladies, you have to grow. बहनों, आपको भी बढ़ना पड़ेगा। You have to grow. आपको बढ़ना पड़ेगा। Jesus is mine. यीशु मेरा है। That's beautiful. बहुत ही अच्छी बात है। But second point, you should be able to say that. लेकिन दूसरा पॉइंट, आप बोलने के लिए योग्य बनना I चाहिए। am his. और मैं उसका हूँ। I belong to Jesus. मैं यीशु का हूँ। Open your mouth and say that. This is the Christian maturity. यही मसीह जीवन का सायानापन है। This is the Christian maturity. यही मसीह जीवन की परिपक्वता है। You are dreaming in the world without any purpose. और आप इस दुनिया में ऐसे ही कोई कारण बिना सपना देख रहे हो। There is an end for you in this world. Do you know that? आप जानते हो कि दुनिया में आपके लिए एक अंत रखा हुआ है। Even if you do not want to go out of the world, यदि दुनिया में से आप जाने के लिए नहीं चाहते हो तो भी the world will reject you. दुनिया आपको इनकार करेगा। You got the point?
समझ में आ रहा है There आपको? was some great man, yesterday we studied that. कल एक बड़ा मनुष्य के बारे में हमने पढ़ा था. That old fellow उस बूढ़ा व्यक्ति accumulated wealth and wives and children by deceit. और धोखेबाजी के कारण उसने पत्नियों को और बच्चों को कई सारे संपत्ति बनाया. Once again, और धोखेबाजी के कारण उसने पत्नियों, बच्चे और कई सारे संपत्तियों को बनाया. just a great multitude. और बड़े झुंड के लोग, When the problem came, जब समस्या उसके जीवन में आया he confessed in this way. और इस प्रकार उसने With कबूल this किया, staff I crossed the river. और इस छड़ी के द्वारा मैंने उस नदी को पार किया. With this staff I crossed the river. इस लाठी के द्वारा मैंने उस नदी को पार किया. Seventh standard, seventh standard, 7th standard, fourth standard, 4th standard, second standard, 2nd standard, with a half knicker, और हाफ निकर पहनकर with a small dabba. और छोटे डब्बा के साथ You crossed the river. आपने नदी को पार किया. And when you came to the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, when you began to follow Christ Jesus, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चले, you say, आप बोलते हैं, oh, I have become a multitude. देखिए मैं एक बड़ी जाति बन I गया, have become a multitude. मैं बड़ी जाति बन गया. Many people came with 10th standard staff. कई लोगों ने 10वीं क्लास का लाठी लेकर आए. Most of the people who came from Travancore, जो लोग ट्रैवनकोर से अधिकतर जो लोग आए थे, 10th standard 10वीं क्लास or 12th standard, या 12वीं क्लास, or some ladies with a nursing certificate. और कुछ बहनों नर्सिंग का सर्टिफिकेट लेकर आए They थे. crossed and crossed and crossed. उन्होंने पार किया. They met my master. उन्होंने मेरे स्वामी से मुलाकात Master किया blessed them. और मेरे स्वामी ने उनको आशीष They दिया. have become so great. वो इतनी बड़े जाति हो गए. Hallelujah. हालेलुया. You have done it by hard work. आपके कठिन परिश्रम से आपने किया But है. this Jacob is not like that. लेकिन ये याकूब ऐसा नहीं है. A crook. वो एक ठेड़ा है, A crook. वो चतुर है, A crafty man. एक चालाक व्यक्ति है. From whom he inherited this craftiness? ये धूर्तपन उसने कहां से लिया? Sam, you are not listening. From whom he inherited this craftiness? ये चालाकी उसको कहां Now से then, मिला? This crookedness, from whom he obtained that? ये टेढ़ापन उसको कहां से मिला? From his mummy. उसकी मम्मी से मिला. They were all good people. सभी लोग अच्छे थे. And this fellow made use of this to the maximum extent. और इस व्यक्ति ने बहुत ही अधिकतर इस बातों का इस्तेमाल किया. Mr. Jacob, मिस्टर याकूब, Mr. Jacob, मिस्टर याकूब, Mr. Jacob, मिस्टर याकूब, one day you are going to leave everything. एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना You are पड़ेगा. going to leave everything. सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा. Is that right? यस, Is that right? यस. You are going to leave everything. सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा. Forcibly, you will be made to leave everything. जबरदस्ती तुम्हें इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा. Yes? You want to sit? Then the people will start sleeping. You are tired? You are tired? I'm observing that. Praise the Lord. Hallelujah. That young man, very, very young man. My grandson says he is tired of standing. Hallelujah. You can be seated. Praise the Lord. But observe everybody's eyes. Praise the Lord. Hallelujah. I was observing everybody. मैं सभी लोगों की आंखों में देख रहा था. See that fellow dead? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. I have voluntarily renounced everything. मैंने सब कुछ अपने मर्जी से मैंने सब कुछ छोड़ दिया. I have voluntarily renounced everything. मेरी इच्छा से मैंने सब कुछ विषयों को छोड़ दिया. You understand that? आपको समझ में आ रहा है? Brother, listen here. I have voluntarily renounced everything. अपनी मर्जी और इच्छा से मैंने सब कुछ छोड़ दिया. And this Jacob, और इस याकूब, he is going to be forcefully renounce everything. और उसको जबरदस्ती सभी विषयों को छोड़ना पड़ेगा. What is good? और कौन सा बात अच्छा है? Voluntarily renouncing is good or अपने forcibly renouncing is good? अपने मर्जी से छोड़ देना अच्छा है या जबरदस्ती से छोड़ देना अच्छा है? Those fellows are not listening that. They are sitting now comfortably, they are not listening. It is voluntarily renouncing is good or forcibly renouncing is good. अपने मर्जी से छोड़ Please देना open अच्छा your है mouth. या जबरदस्ती करना उसके बाद छोड़ना अच्छा है? Hallelujah. Praise the Lord. This Jacob was not able to die. याकूब मर नहीं पाया. He was not able to die. वो मर नहीं सका. Lingering. उसका जीवन अटका हुआ है. चर्च में ऑक्यूपाई करने वाले थोड़ा ध्यान से सुनिए. दूसरे लोग भी ध्यान से सुनना है.
काश चेयर में बैठने वाले बहुत ध्यान से सुनना है. This fellow could not die. ये व्यक्ति मर नहीं पाया, This fellow could not die. ये व्यक्ति मर नहीं सका. When he met the king, जब उसने राजा से मिला, uncle, what is your age? अंकल आपका उम्र कितना है? And he said, और उसने कहा, 130 years. उसने बोला कि 130 साल है. I am not able to live as my fathers. मेरे पिताओं के समान मैं जी नहीं पाया. 130 years. 130 वर्ष. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. ഇത്ര മതിയെന്നല്ലേ പറയുന്നേ? മതിയെന്ന് പറയുന്നു, ഇനി വേണമെന്ന് പറയുന്നു. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Enough. Enough. काफी है, Enough. काफी है. പറഞ്ഞിടുവാൻ ജലം ലഭിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ശക്തത്തോട് മാർ സെക്രട്ടറി സാബ്. നേടുവാൻ വേണ്ടതായ ബലം ലഭിച്ചാൽ മതി എനിക്ക്. The way we are putting up the flesh, हम जो हमारे शरीर को बनाते हैं, it is very difficult for us. हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा. I am not talking about the physical expression, मैं उसका जो दुनिया के मतलब से नहीं बोल रहा the हूँ. carnality, जो शरीर की अवस्था, the carnality, जो शरीर का रूप, the carnality is increasing. वो शरीर का काम हमारे बढ़ते जाता है. This carnality won't allow us to fly away. और ये शरीर के काम हमें उड़ने के लिए सहायता नहीं करेगा. Yesterday we studied this. कल हमने पढ़ा था, Jacob, he says, याकूब बोलता है, my 130 years. मेरे 130 वर्ष. And what is that? A few. वो थोड़े हैं. Is right? A few. मेरे दिन थोड़े हैं. Funny, 130-year-old man, you said you have very few years. और 130 साल जिसने रहा वो बोलते हैं मेरे दिन थोड़े हैं. What a funny patriarch we are having. कितने हंसी की बात है. 130 years. 130 साल जिया And he says, my days are few. और बोलते हैं मेरे दिन थोड़े हैं. Number 2. दूसरा, What is that, Peter? Number 2, what is that? Say that man in English. Huh? Difficult. And your mother wants you to live for 200 years. Your mother wants you to live for 200 years. Difficult. Difficult. Sir, say. मेरे दिन दुख से भरे हुए हैं. Yes, that is Dukse. And what is that? దుఃఖ సహితమైనవిగా കഷ്ടമുള്ളത് Kashta. కొంచెము చంచలముള്ളത്. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. The sooner we go, it's good for us. जितना जल्दी हम जाए उतना हमारे लिए अच्छा है. The sooner we go, it is good for us. जितना जल्दी हम चले जाए उतना हमें अच्छा है. What is that to enjoy? यहाँ पर आनंद मनाने के लिए क्या है? For persons like me, मेरे समान लोगों को my only desire is to be with my master. मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे स्वामी का साथ मुझे रहना है. Tomorrow also I have to go there only. कल भी तो मुझे जाना है. After 10 years also I have to go there 10 only. साल के बाद भी तो जाना है. Why to go suffer for 10 more years? 10 साल और भी दुख क्यों भोगना है? It is better I go there. ये अच्छा रहेगा कि अभी चले जाओ. Full of difficulties. और पूरा दुख से भरा हुआ है. Job, another patriarch says. और यहू अयूब बोलता है. Job, another patriarch says. और दूसरा पुरखा अयूब कहता है. 14:1. Job, another patriarch says. और अयूब बोलता है. 14 and 1. 14 and 1. अयूब 14 का पहला वचन. Man born of woman. Man born of woman. स्त्री से जन्म पाया हुआ मनुष्य. Why she have to by heart all these things? From this age, man born of woman स्त्री के द्वारा जन्म पाया पुरुष is of few days. वो थोड़े दिनों का है. And next point is very, very important. Next point is very, very important. अगला पॉइंट बहुत ही मुख्य है. Say, open your mouth and say, full of trouble. दुख से भरा रहता है. You say, enjoy, 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 enjoy. आप बोलते हैं आनंद मनाना, खुशी मनाना, आनंद मनाना, खुशी मनाना. By the age of 13, I made up my mind. 13 साल की उम्र में मैंने निर्णय ले लिया. You are 25, you have not been able to make up this mind so far. आप 25 हो गए, अभी तक आपने ऐसा मन नहीं बनाया At है. the age of 13, my master said, 13 साल की उम्र मेरे स्वामी ने कहा, Stevens,
स्टीफन्स, don't think of joy in the world. दुनिया में आनंद मनाने के बारे में नहीं सोचना, Don't think enjoyment in the world. दुनिया की खुशी के बारे में नहीं सोचना। See the sorrows the other people are facing. देखो दूसरे लोग कितना दुख भोगते हैं, See other people how much sorrow they are facing. देखो दूसरे लोगों के जीवन में कितना दुख हो रहा है। This is only vanity. ये सब कुछ व्यर्थ है। So I told my master, मेरे स्वामी से मैंने कहा, Master, it's enough. स्वामी मेरे लिए काफी है, Whatever I have seen is enough. जो कुछ मैंने देखा है वो काफी है। I will do your will. मैं तेरी मर्जी को पूरा I करूंगा, will do your will. मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, Whatever it may be, चाहे कुछ भी होने दो, I will do your will. मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। What I sang, at the age of 13? 13 साल की उम्र में मैंने कौन सा गीत गाया आप जानते हो? லோகம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் போதும் இயேசு எனக்கு சாத்தானே உன் இன்பம் வேண்டாம் கொண்டு போவும் சரக்கை. I don't know the world. मैं दुनिया को नहीं जानता, I want nothing from the world. दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए था। Oh devil, मैं शैतान, you take away your joy, तेरे आनंद को लेकर जाओ, all your things. तेरे सारे वस्तुओं को लेकर I जाओ। was born in Travancore मैंने ट्रावनकोर में जन्म लिया during a great revival. और बड़ी एक बेदारी के समय में। The Travancoreans have forgotten that. ट्रावनकोर के लोग इस बात को भूल गए हैं। Sadhu Kochunyo, साधु कोचुगुंजो, his biography is laying somewhere. उनका जीवन के बारे में लिखा हुआ He पुस्तक was पढ़ा a है। CMS man, वो सीएमएस का व्यक्ति था, but a very mighty preacher. लेकिन बहुत ही महान प्रचारक था। Thousands of drunkards in Travancore were turned to Christ. और हजारों हजारों पियक्कड़ लोग ट्रावनकोर में बच गए। He was a very good singer. अच्छा गीत गाने वाला व्यक्ति था। So my father मेरा पिता and his people, और उनके लोग, they were converted to Christ at that time. और उस समय मेरे परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में आए। What type of lives they were having, I do not know that. किस प्रकार के जीवन वो लोग जी रहे थे मैं नहीं जानता हूँ, But I remember लेकिन मुझे याद है कि I got one of the Bibles of my uncle मेरे एक चाचा का बाइबल मुझे मिला। after he died. उसकी मृत्यु के बाद वो मुझे And मिला, I was going through the old copy of that Bible. और उस बाइबल की पुरानी प्रति को मैं देख रहा था, How these people have used their Bible. और इन लोगों ने कैसे बाइबल को उपयोग किया मैंने A देखा। great mighty revival was going on. एक बड़ा महान बेदारी वहां हो रहा था, That man was used in Chennai, in Ceylon and other places. और उसको चेन्नई में, सिलोन में उस मनुष्य को परमेश्वर ने इस्तेमाल I किया। was born at that time. और उस समय मेरा जन्म हुआ। My father said, मेरे पिता ने बोला at the age of 31, 31वां उम्र में, at the age of 31, और 31 का उम्र I में told my father, मैंने मेरे पिता से कहा, I have decided to go for the Lord's ministry. मैंने परमेश्वर की सेवकाई में जाने के लिए निर्णय कर चुका हूँ, I do not want to get married. मुझे शादी नहीं करना है। And he was sitting in a cot और वो पलंग पर लेटे हुए थे, without looking at me. और मेरे सामने देखे बगैर He told me like that. उसने मुझसे कहा, Even while we are born, I dedicated you for that service. जब तुमने जन्म लिया तभी तुझे सेवकाई के लिए मैंने समर्पण कर दिया है। I thank God for that. मैं परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Even when I was born, जब मेरा जन्म हुआ, my father dedicated me. मेरा पिता ने मुझे समर्पण And किया, dedication was working with me at the age of 13. और उस समर्पण 13 साल की उम्र में मुझ में काम कर रहा था, Still, I hold on to that truth. और उस समर्पण में और सच्चाई में अभी तक मैं थामे I रहता have हूँ, not deviated from my surrender. और मेरे समर्पण से मैं बिल्कुल हटा नहीं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। 69 years back. और 69 सालों के पहले, I have not deviated from that. और उस समर्पण से बिल्कुल नहीं हटा। Many shortcomings came. कई घटिया और कमियां मेरे जीवन में आया। I could not fulfill the desire of my master fully. मेरा स्वामी की सारी मर्जी को मैं पूरा नहीं कर पाया, I grieved about that. और उसके बारे में बहुत खेदित और दुखित I हूँ। am still grieving अभी भी मैं खेदित हूँ, because of my life which offended my master sometime. क्योंकि कभी मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर को चोट पहुंचा है। My beloved, I said, because I offended my beloved sometime. मेरा प्रेमी को मैंने कुछ बार दुख पहुंचाया, I could not live up to his expectation. और उसकी जो मेरे बारे में इच्छा थी उतना मैं जी नहीं पाया, I still feel sorry for that. और इसके लिए मैं बहुत ही दुखित हूँ। You understand that? आपको समझ में आ रहा है? I'm not grieved that I don't have a wife.
मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे पास पत्नी नहीं, I am always happy that because I don't have that botheration. और मैं हमेशा इस बात में खुशी हूं क्योंकि ये बोझ मेरे लिए नहीं है। Once again, हमेशा इस बात में मुझे खुशी है क्योंकि ये बोझ मेरे ऊपर नहीं है। botheration is both. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। People, these fellows won't open their mouths. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। I am 100% devoted to my God. मैं 100% मेरे परमेश्वर के प्रति मैं समर्पित हूँ। A man who is married, एक व्यक्ति जो शादी किया है, he is 50% only devoted to God, केवल 50% वो परमेश्वर के प्रति वो समर्पित है। according to the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार से बोलता Is हूँ, that right? Is that right? Because the Bible says क्योंकि बाइबल में लिखा है he has to please his wife also. उसको अपनी पत्नी को प्रसन्न करना पड़ता है। Is it in your Bible? Is it in your Bible? This will, वो अभी मेरा sermon सब वहाँ divert करो. Is it in your Bible? आपकी बाइबल में ऐसा है, A man who is married, is it in your Bible? जो व्यक्ति शादी किया है, These fellows don't know, brother. They don't read that chapter. First Corinthians, पहले कुरिन्थियों, First Corinthians, quick. First Corinthians. Don't be upset with me. God has given me the privilege to open every chapter of the Bible and speak from that. परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया है कि परमेश्वर के वचन में से सभी भागों को निकालकर मैं आपको बताऊं। What is it? आप माइकल वाइके 7:33. You are very quick in getting some verses. Thank you very much. 7:33. 7वां अध्याय 33वां वचन। Yeah. Funny fellows. Praise the Lord. You don't know this Bible. 7:33. Please read all of you louder. A married man is concerned about the affairs of this world. विवाहित मनुष्य संसार की बातों में चिंता रहता है, How he can please his wife. अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। Is it true? सही लिखा है क्या? Is it true or not? ये सच्ची बात है? Or is it true or not? ये सच्ची बात है कि नहीं? My wife will not say, dance and say, my mother is sick and I'm just flying. मेरी पत्नी ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरी माँ बीमार है और मैं उड़ के जाना चाहती हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. My money is not wasted. मेरा पैसा इस काम के लिए बिगड़ता नहीं है, According to this word of God. और परमेश्वर के इस वचन के आधार So पर। a married man is only concerned about God and his affairs 50% only. और एक विवाहित व्यक्ति परमेश्वर के बारे में, उसके सेवकाई के बारे में केवल 50% उसके बारे में चिंतित And when है। a child is born, और जब एक बच्चा जन्म होता his है devotion to God is 30% only. और उसके परमेश्वर के प्रति उसका जो समर्पण 30% होता Wife है, robs 30%. Wife robs 30%. और पत्नी 30% ले जाती है। I said rob, R-O-B, rob. वो चोरी करती है 30%। God's time is 100%. परमेश्वर 100% बोलता है। Wife robs 30% 30% पत्नी लूट लेती है and the child robs 30%. और 30% बच्चा लूट लेता है। Am I right? सही बात है। Is it practical? ये प्रायोगिक बात बोलता Ask हूँ। brother, ask Titus. ब्रदर टाइटस से पूछिए, You ask him, it is a practical thing. ये बिल्कुल प्रायोगिक बात है। And ask this fellow, इस भाई से पूछिए, he is much more than that. और उससे भी बढ़कर है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। And this fellow is no problem. We have to devote my life to Jesus Christ. Praise the Lord. So I made up this point at the age of 13. मैंने अपना मन 13 साल में बना लिया। Miraculously, बहुत ही अचंभा रीति से the Lord has been leading me all through my life. परमेश्वर मेरा जीवन भर मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से चलाया। If I write a book back, you sit back and write a book, यदि मैं बैठकर एक पुस्तक को लिखूं तो all the leading and everything was according to the word of God. और सब कुछ जो चलाओ परमेश्वर के अनुसार सब कुछ में चला। So now I am talking about Joseph only. अभी मैं यूसुफ के बारे में बोलता हूँ। Joseph had an opportunity. यूसुफ को एक अवसर मिला In his childhood, उसके बचपन में। God gave him 2 visions. परमेश्वर ने 2 दर्शन उसको दिया। What was the vision? कौन सा दर्शन था? Once एक बार he saw
उसने देखा 11. Take it, man. We are talking, studying about Joseph. 11. 11. 11. Say that, man. Read. Genesis 37. 9th 9th verse. We were binding sheaves of corn out in the field when suddenly my sheep rose and stood upright. Read all of you. You can read all of that, man. Read louder. Genesis 37:7. ఏమనగా మనం Genesis 37:7. పనులు కట్టుచుట్టి ఆ పని లేచి నిల్చు- No sound. These fellows are putting their heads down. अरे भैया तुम लोग तो संजय तुम सिर सीधा तो रखो यार. अरे प्रिंस सीधा रखो यार. We were binding sheaves of corn out in the field. हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे When और तब suddenly my अचानक से sheep rose मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हुआ and stood upright. और उठकर वो सीधा खड़ा हुआ While your sheaves gathered round mine and bowed to it. तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। Is it in your Bible? Is it in your Bible? And he should have kept it secretly. उसको ये बातें छिपा कर रखना था, But he just openly said that. लेकिन उसने अपना मुंह खोलकर बोल And दिया। when his brothers heard this, और जब उसके भाइयों ने बात को they सुना understood the meaning of the dream. और उसका स्वप्न का अर्थ को वो समझ And गए they started hating Joseph. और वो यूसुफ को वो लोग घृणा करने लगे। Another dream he had. और दूसरा एक स्वप्न भी यूसुफ ने पाया। What was the dream he had? और दूसरा स्वप्न क्या था? 9. 9th verse। Read it. 9. He had another dream. एक दूसरा स्वप्न उसने देखा। Listen. I had another dream. सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा This है। time, इस समय the sun and moon and Surya- 11 stars were bowing down to me. सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। When Jacob heard it, जब याकूब ने सुना, he rebuked Joseph. उसने याकूब को डांटा। What do you mean? तुम क्या समझते हो? Myself will come and bow before you, and क्या neither मैं- myself and my wife? मैं और मेरा पत्नी तुम्हारे सामने आके दंडवत करेंगे क्या? Is it right like that? But the word of God says, लेकिन परमेश्वर के वचन में he लिखा है, kept this in his mind. Is it right? उसने अपने मन में ये बात को संग्रह करके रखा। He didn't forget that. उसने भूला नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord। So God's purpose was परमेश्वर का उद्देश्य ये था, planned very much earlier. पहले से परमेश्वर ने योजना बना लिया था। Boys, लड़के, girls, लड़कियां, if you will listen to the voice of God, यदि परमेश्वर का शब्द को आप सुनोगे तो God can tell you about your future. परमेश्वर आपका भविष्य के बारे में आपको बोल सकता है। What you would be tomorrow. कल आप क्या होने वाले हैं, What you would be next year. अगला साल आप क्या होने वाले हैं, God can tell you, God can show you. परमेश्वर आपको बोल सकता है, आपको दिखा सकता है। But you must keep this in your mind. लेकिन आपको इसका आपका मन में बना कर रखना If you are पड़ेगा। meant for God, यदि आप परमेश्वर के लिए है तो God can show you. परमेश्वर आपको दिखाएगा। You must be born again. आप नया जन्म पाकर, You must be saved. आप उद्धार पाकर, You must be baptized. आप बपतिस्मा लेकर You must be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। Then God can reveal things of your future. तभी परमेश्वर आपके भविष्य के बातों को आपको प्रकट करके दिखाएगा। In order to fulfill this plan of God, ये परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए there were certain characteristics which were not congenial to the spiritual life. और कुछ ऐसे स्वभाव थे जो आत्मिक जीवन के लिए योग्य नहीं था, ऐसे कुछ बातों थे। Yesterday we studied that. कल हमने उसको पढ़ा था। You can come on Saturdays also. We studied yesterday. कल हमने इस बात को पढ़ा था। What was that? और वो क्या था? What was his experience? उसका अनुभव क्या था? When he was 17 years old. जब वो 17 साल का था, When he was 17 years old, जब यूसुफ 17 साल का था, he was sent by his father उसके पिता ने उसको भेजा to see about his cousins. आप अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, देखने के लिए भेजा। Cousins. उसके रिश्तेदार को मिलने, Not his cousin brothers, you can say that. और अपने भाइयों को मिलने के लिए उसके पिता ने भेजा। One father
एक ही पिता and many wives. और अलग अलग पत्नियां, One father एक पिता and many wives. और कई पत्नियां, So they were also his cousin brothers. और इसलिए वो उसके भाइयों ही थे। They were doing some mischief in the field. और वे लोग खेत में कुछ कामों को करते थे। And Joseph came and reported to his father. और यूसुफ ने आकर ये बात अपने पिता को बता दिया। Backbiting, चुगली किया, backbiting, चापलूसी किया tail bearing, backbiting. और चुगली किया। Use the English words were tail bearing, something more than that. Slandering, slandering. उसके पीछे बोलने लगे। भैया slandering बोलो ना, तुम्हारा भाषा में तो बोल। చాడీలు, Backbiting, backbiting. चुगली करने लगे। तुम्हारी भाषा में बोलो ना sister. Backbiting, tail bearing, కోల్ చొల్లుదల్ slandering. This was a small character of Mr. Joseph. यूसुफ का ये छोटा सा एक स्वभाव था। 17 years old. 17 साल का उम्र है He was going to the field. और वो खेत में जा रहा था। And those boys were mischief making boys. और उन लड़के थोड़ा मस्तीखोर थे। Is it in your Bible? In whose Bible it is there? इसके बाइबल में लिखा है। Please raise your hand and see that. Please raise your hand. Let the Lord see your hand. Raise your hand up. इसका बहन का ये बहन पढ़ती बाइबल नहीं पढ़ती है, इसलिए उसका बाइबल में नहीं है, इसके बाइबल में भी नहीं है। Which chapter it is? 37 chapter. Joseph, 37वां अध्याय में a young man of 17, a young man of 17 एक जवान जो 17 साल का उम्र है, was tending the flocks with his brothers. वो अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। The sons of Bilhah and Silpah, और वो लड़के अपने पिता his father's wives. और अपने Will you please open your Bible and say that Joy is not opening his Bible? Will you please open your Bible and say whether I am telling the right things or not? आपके बाइबल खोलकर बोलिए मैं सही बात बोलता हूँ कि नहीं। Lift your Bibles. अपने बाइबल को उठाकर पढ़े। Lift your Bibles. आपके बाइबल को उठाकर पढ़े। Lift your Bibles. बाइबल को उठाकर पढ़े। Is it in your Bible? आपके बाइबल में ऐसा लिखा है। Is it in the Bible? लिखा है आपके बाइबल में। A small mind of tale bearing. और एक छोटा सा मन जो दूसरों का चुगली करना या बुराई करना, Backbiting. और पीछे बोलना, Slandering. और चापलूसी करना, They all come in one family only. ये सभी विषय एक ही परिवार के अंदर आ They जाते हैं। all come in one family only. एक ही परिवार का विषय ये। I know your mouths are very holy. मैं जानता हूं कि आपका मुंह बहुत ही पवित्र Is है। that right? You don't practice this, no? आप इन विषयों को करते नहीं हैं। Your mouths are so holy. आपका मुंह बहुत ही पवित्र है। Why can't you say that, man? Yes or no? Your mouths are so holy. आपके मुंह इतने ही पवित्र है। You don't do this. आप ये काम नहीं करते। In the home you don't practice it. आपके घर में ये काम नहीं करते In हो। the school and college you never practice स्कूल और it. कॉलेज में भी ये नहीं करते हैं। And the working place you never practice और it. काम के जगह में बिल्कुल नहीं करते हो। And when the son brought these such reports to the father, जब अपना इस बेटा ने ऐसे बुराई का समाचार पिता के पास लेकर आए, the word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, father was so pleased. Is it right in your Bible? और उसका पिता इतना प्रसन्न हो गया। Please open your mouth and say yes or no. The father was very pleased. पिता बहुत ही खुश हो गया। And he began to love this fellow more. और इस बेटे को अधिक प्रेम करने लगा। And second point, और दूसरा पॉइंट, he began to give him very beautiful garments. उसको बहुत ही रंग बिरंगे वस्त्र देने लगा। वो बच्चा को बैठने के लिए जगह नहीं, please stand up. Never sit with those people. Come and sit here. Never sit with those people. Is it in your Bible? Is it in your Bible? आपके बाइबल में ऐसा लिखा है? Is it in your Bible? लिखा है आपके बाइबल में ऐसे? Backbiters, हे चुगली करने वाले लोग, slanderers, हे चापलूसी करने वाले लोग। and what is the other word we can use it? What's that? Tail bearers. I forget the word. Tail bearers. Tail bearers. बुराई करने वाले लोग। If you do this in your company, यदि आपकी कंपनी में ऐसे करोगे your तो boss will be very happy. आपका बॉस बहुत खुश हो जाएगा। He will give you lift.
वो आपको और भी ऊंचा If करेगा। you do this in your school or college, आपके स्कूल या कॉलेज में करोगे तो you will get good position in the college. आपको स्कूल में अच्छा पद मिल जाएगा। If you do this, practice this in your home, यदि घर पे ऐसा करोगे तो and your mother or father, they will say, very nice, my son, very आपका nice. मम्मी और My पापा daughter, कहेगा very nice. मेरा बेटा बेटी तूने अच्छा काम किया है। But God has a greater plan for this man. लेकिन परमेश्वर को इस मनुष्य के बारे में बड़ा एक उत्तम योजना था। After so many years, बहुत सालों के बाद something is going to happen in the land. कुछ बात उस देश में होने वाला है Something is going to take place for his whole family. और उनके परिवार के लिए कुछ संभव होने वाला है। God wanted to bless the family of Jacob. परमेश्वर याकूब का परिवार को आशीष देने के लिए He चाहता wanted to enlarge the family. है और उस परिवार को परमेश्वर बढ़ाना चाहता He था wanted to make this family a ruling family in that country. और उस देश में परिवार इस परिवार को परमेश्वर राज्य करने वाला परिवार God बनाया। wanted to use this man. परमेश्वर इस व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए चाहता God है wants to use this man for the purpose. और उसी काम के लिए परमेश्वर इस व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता था। But this type of character is unfit for him. लेकिन इस प्रकार का स्वभाव के कारण वो अयोग्य हो जाता To है become a leader of that family, उस परिवार का नेता बनने के लिए to become a protector of that family, और उस परिवार का संरक्षक बनने के लिए and to become a provider of that family, और उस परिवार का प्रबंध करने के लिए and in the difficult times to support a large number of people from perishing. और दुख के समय में उस बड़े परिवार को और देश को संभालने के लिए This attribute of this man is not right. और इस व्यक्ति का ये स्वभाव सही नहीं है। This character of this man is not right. इस व्यक्ति का ये स्वभाव सही नहीं। God can't use him. परमेश्वर उसको उपयोग में लेकर नहीं आ Mr. सकेगा। God can't use him. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को उपयोग नहीं कर सकता है। Sister, God can't use you. हे बहन, परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर Unless पाएगा। you shut up your mouth in such cases, और इस ऐसे बातों में आपका मुंह को जब तक चुप नहीं रखोगे unless you purify your mouth in such cases, और ऐसे समूह में अपने मुंह को जब तक आप पवित्र न you करोगे can't become a source of blessing for others. आप दूसरों के लिए आशीष का सोता नहीं बन सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। God wanted to get rid of this. परमेश्वर इन सारी बातों उसका जीवन से निकालना Why do चाहता है। you suffer? Why do you suffer? तुम क्यों दुख भोगते हो? Mister, why do you suffer? हे मिस्टर, तुम क्यों दुख भोगते हो? Why many of your prayers are not answered? क्यों तुम्हारे बहुत प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता You है? say, आप बोलते I हैं am better than the pastor. मैं पास्टर से अच्छा हूँ, I am better than the elders. मैं हमारे प्राचीनों से अच्छा But हूँ, still I am suffering. फिर भी मैं कष्ट उठा रहा Still हूँ, I am suffering. फिर भी मैं दुख उठा रहा हूँ। These sufferings you are facing in order to make you pure. और ये सारे कठिनाई इसके लिए सहन करते परमेश्वर आपको और भी पवित्र बनाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We read early. हमने पहले पढ़ा था He is mine. वो मेरा है, You don't repeat that word. He is mine. वो मेरा है, ये लोग बोलते नहीं ब्रदर. ഞാൻ അവനോട് He is mine. वो मेरा है I am और मैं his. उसका हूँ। You forget that. आप भूल जाते हैं। Don't think I belong to my wife. ऐसा ना सोचे कि मैं मेरा पत्नी का हूँ, Don't say I am belonging to my children. मेरे बच्चों को ऐसा ना बोले। That is a funny idea. ये बिल्कुल मूर्खता की बात This is है। an idea of the man who is walking in the street. और जो सड़क पे चलने वाले व्यक्ति का ऐसा मन होता You है, belong to your wife. वे अपने पत्नी के हैं, You belong to your husbands. आप आपके पति के हो, But Jesus gave his life. लेकिन ईश्वर ने अपना जीवन दे दिया, He redeemed you. उसने आपको छुड़ाया He ransomed you. और उसने आपको दान He देकर saved छुड़ाया। you. उसने आपको छुड़ाया, Not to be a husband of your wife. आपके पत्नी का पति बनने के लिए Not नहीं, to be a wife of your husbands. और अपने पति का पत्नी बनने के Now लिए नहीं। you belong to Christ. अभी आप मसीह के हो। Open your mouth and say you belong to Christ. आपके मुंह खोलकर बोलिए कि मैं मसीह का हूँ। या औरतों को मुंह भी नहीं है, क्या करूंगा? मसीह का हूँ। इनका मुंह का आत्मिक दे दिया है. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। This is the New Testament teaching. और ये नया नियम की उपदेश ये है, This is the New Testament doctrine. नया नियम का उपदेश ये This is है, the plan of God concerning you. और आपके बारे में परमेश्वर की योजना ये है। Through Paul, God says, पौलुस के द्वारा परमेश्वर you कहता are है, not your own. Is it in your तुम Bible? अपने Matthew? अपने आप के खुद Is के it, नहीं हो। is it in your Bible? Open your mouth and say, read that man. You are not your own. Is it in your Bible? तुम अपने That खुद के नहीं Raju हो। doesn't have that in his Bible. And the Prasanna will never have it in his Bible. Prasanna का Bible में ये वचन कभी नहीं मिलेगा. What is that? I'm telling you boys.
Praise the Lord. You are not your own. What is it? You are not your own. These boys are not forgetting that. You are not your own. What is it? वो आगे बैठने वाली बहनों को सुनने में नहीं आता. You are not your own. What is it? What is it? Those ladies are not speaking. They are speaking to their husbands. They are not speaking in the church. First Corinthians You are not your own. Where is it, Brother Matthew? Corinthians 6. माइक में बोलो. 6:19. 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19. 6:19. And this man is putting 6:9. 1 Corinthians 6:19. Do you not know? Read, all of you. Open your Bibles and read, man. If you have got guts, please read it. You are not your. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? क्या Who तुम is, these ladies have no voice. मैं यहाँ जो पढ़ता हूँ यहाँ स्त्रियों को आवाज भी नहीं है. देखो सबका आवाज होगी. शैतान ने चोरी कर दिया है. पढ़ो, जोर से पढ़ो, क्या तुम नहीं जानते कि जोर से पढ़ो. आत्मा का मंदिर जो तुमने बसा परमेश्वर की ओर से मिला, तुम अपने नहीं. ఓయ్ తెలుగుని చెప్పయ్యా. మొదటి కొరింథీయుడు 6:19. ఈ బైబిల్ లేదా? ఈ పరిశుద్ధాత్మకు చదవలేవా? ఆలయమై ఉన్నారని చదువురా. పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నారని మీరు నీవు ఎరుగరా? పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నారని మీరు ఎరుగరా? మీరు ఎరుగరా? మీరు మీరు మీ సొత్తు కారు. అయ్యయ్యో, ఏంటి ఇది ఉపదేశం? ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? నేను అనుకోలేదే. మీరు మీ సొత్తు కాదు, కానీ భర్త కదా. నీవు నీ సొత్తు కాదు, భర్త సొత్తు కదా నీవు. చదువురా. మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీరు విలువ పట్టి కొనబడిన వారు గనుక కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో నీ దేహముతో దేవునిని Praise the Lord. समझ में आता है लेलिया को? समझ में आता है? आपको समझ में आता है? ഇതുവരെയും കർത്താവിന് വേണ്ടിയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ നോക്ക്, ഉധർ देखो, वो तो प्रभु के लिए जीने वाला है. देखो you are making Christianity a tamasha joke. చెప్పు man. आप मसीह जीवन को क्या तमाशा बनाते हो? What is this book that you are holding there? आपके हाथ में कौन सा बुक आपने पकड़ा है? It is some science book. क्या विज्ञान का किताब It है? is some text book. क्या कोई पाठ्य पुस्तक है? Is this not to be obeyed? इसको मानना नहीं चाहिए. How far you are obeying this, Mr. Manoj? आप कितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं? ഈ പുസ്തകത്തെ എത്രമാത്രം അനുസരിക്കുന്നു? ഇത് എൻ്റെ ബുക്കല്ല, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ബുക്കല്ല, നിങ്ങളുടെയും ബുക്കാ. ഞാനും നിങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ ജീവിക്കാനായി ഈ പുസ്തകം തന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? മനോജ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? എപ്പോഴാണ് സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നത്? സ്നാനപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. ഒരു സൈക്കിളിൽ 2 പയ്യായേ ഉള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഇത്രയും ചെറുതും ബാക്കുള്ളത് ഇത്ര വലുതായിരുന്നു. അല്ല വണ്ടി ഓടുമോ? ഇത് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നോ? വേഗം തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നോ? ഇരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പുസ്തകമാണ്. ഇത് അനുസരിച്ചേ മതിയാ. Praise God. Hallelujah. तो आप किसका है? विजय कुमार किसका है? प्रसन्न कुमार किसका है? उनके सारे कमाई प्रभु के लिए खर्च करता है प्रसन्न कुमार और ये विजय कुमार. Praise the Lord. उनके सारे यत्न 24 आवर्स उधर एक आदमी बैठा है चश्मा पहनकर वर्गीस के सामने. उनके सारे कमाई सब प्रभु के लिए खर्च करता है. इसलिए कल शाम को भी आ गया मीटिंग के लिए. Every one of you, आप में से हर एक लोग, every one of you, आप में से हर एक लोग, my God will make you stand before the throne of Christ. और मसीह के उस सिंहासन के सामने मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Stop bluffing.
और ऐसे फेंकना बंद कर दो and start obeying. और परमेश्वर की बातों को God मानो। has a plan for Joseph. परमेश्वर को यूसुफ के बारे में योजना है God has a plan for Joseph. और परमेश्वर को यूसुफ के बारे में योजना है, But with this type of crooked character, लेकिन इस प्रकार के टेढ़े स्वभाव के कारण, once again, ऐसा टेढ़ा स्वभाव रखने के कारण, once again, ऐसा टेढ़ा स्वभाव होने के कारण backbiter, और ऐसे बुराइयों करने के कारण tail bearer, और ऐसे चुगली करने के कारण, and say in Malayalam also, Nona parayunnavan. Praise God. Hallelujah. हालेलुया, Nona parayunnavan. Telugu mein bolo. కొండెములు చెప్పుట Ah? కొండెములు చెప్పుట కొండములాటం చెప్పుట, చాడీలు- పన్నాగాలు చెప్పుట, చాడీలు చెప్పుట చాడీలు, వెరీ గుడ్, బ్యూటిఫుల్. కొండములాడుట, పన్నాగాలు చెప్పుట, చాడీలు చెప్పుట. क्या पवित्र लोगों का स्वभाव देखो, पवित्र लोगों का स्वभाव देखो, चर्चा गांडांगे पवित्र लोगों का स्वभाव देखो. मेरे जैसे व्हाइट साड़ी व्हाइट जिबा पहना हुआ लोगों का नाम देखो. बैक बाइटिंग, टेल बेयरिंग, கோல் சொல்லுறது சொல்லிட்டே போயா. கன்னியாகுமரி சொல்லிடுறது பார்த்தா குண்டனி சொல்றது. கன்னியாகுமரி வாடி கொய்தரு குண்டனி சொல்றது. क्या ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट. God will never use you. परमेश्वर कभी भी आपको उपयोग God नहीं, cannot use you. परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर पाएगा। And in order to purify this man, और इस व्यक्ति को पवित्र करने के लिए God has to put him in the oven of fire. और परमेश्वर को उस आग की भट्टी में उसको रखना पड़ेगा। Your question, आपका सवाल, why I am suffering? मैं क्यों दुख उठाता हूँ, Why I am suffering? मैं इतना परेशानी क्यों अनुभव करता Why हूँ, God is not delivering me? क्यों परमेश्वर मुझे छुड़ाता नहीं है, Why my prayers are not answered? क्यों मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। You are not coming up to the standard of God. आप परमेश्वर के उस स्तर तक, उस You दर्जा are तक नहीं आ not रहे, coming up to the standard of God. आप परमेश्वर का उस स्तर और दर्जा तक नहीं पहुंच पा रहे You हैं। have your own plan. आपको आपकी खुद की You योजनाएं have हैं, your own desires. आपकी खुद की इच्छाओं है। God will soon nullify them. परमेश्वर सबको परमेश्वर बिल्कुल बिगाड़ Unless देगा। you fall into the plan of God, जब तक आप परमेश्वर की योजना के अंदर नहीं आ जाएंगे, God is going to block all the doors of prosperity in your life. परमेश्वर आपके सारे समृद्धि के द्वार को परमेश्वर रोक कर बंद करेगा। Why? क्यों? God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, And these ladies don't open their mouths also. God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। In the month of November, नवंबर के महीने में there are so many old people here. यहाँ पर बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं। Have you ever experienced rain in Kutch? क्या कभी न कभी आपने कच्छ में नवंबर महीने में बारिश को In the देखा month है? of November, नवंबर के महीने में have you ever experienced rain in Kutch? कभी भी कच्छ में बारिश को आपने Please देखा है? open your mouth. No! नहीं। One senior lady is sitting there. एक वरिष्ठ बहन यहाँ Another बैठी senior lady is sitting here. और दूसरी वरिष्ठ बहन बैठी है And one senior man is sitting there. और एक वरिष्ठ भाई बैठे हैं। And there is senior man. वहां पर भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। I have 62 years service in Kutch. 62 साल उसका अनुभव मुझे कच्छ में है I have never experienced rain मैंने- in Kutch so far. और कभी भी ये मौसम में मैंने, ये महीने में मैंने बारिश नहीं देखा है। Will you please tell your governments? Will you please tell your governments? आपके सरकारों से कहेंगे क्या? Will you please tell your party? It is possible with my God. जो मनुष्य से असंभव है, मेरा परमेश्वर से वो संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The book of Job says, अय्यूब के पुस्तक में लिखा है, God uses this rain for some purposes. परमेश्वर इन बारिशों को कुछ उद्देश्य और योजना से करता And है। there was a photo in the Times of India. टाइम्स ऑफ इंडिया में एक चित्र आया था And the fields in Nakatrana were made plain by this snow. और नखत्रान के खेतों में इन बारिशों के द्वारा बिल्कुल वो जमीन खराब हो गया Is that right? All the cultivation was spoiled. और वहां का खेती और फसल पूरा बिगड़ I गया। want to tell these fellows, मैं इन लोगों से बोलता हूँ, don't challenge God. परमेश्वर को चुनौती न दो, Fall in line with the plan of God. परमेश्वर की योजना के अंदर आ जाइए। Fall in line with the plan of God. परमेश्वर की योजना के अंदर और भीतर आ जाइए। Subject yourself.
अपने आप को नम्र कीजिए, Subject yourself. अपने आप को दीन करिए। The word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, you are not your own. तुम अपने नहीं हो। These fives are not opening their mouths. They say they are dreaming now. They are dreaming so many things. और बहुत विषयों का सपना देखते हैं। Forget those dreams. वो सारे सपनाओं को भूल जाओ Commit your dreams to the plan of God. और आपके सपनों को परमेश्वर की योजना के अंदर सौंप दीजिए। Lord, what you want me to do, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, I will do that. मैं उसे करूंगा। What you desire me to do, आप मेरे बारे में क्या चाहते I हो, will do that. मैं वो करूंगा। Why? क्यों? The authority I'm telling you, और अधिकार के साथ मैं बोलता God's हूं। word says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, you are not of your own. तुम अपने नहीं हो। See, no sound. All have gone down. The spirit has gone, and only the body is remaining. आत्मा बुझ गया, केवल शरीर I बाकी है। want to maintain. मुझे ये बोलना है I कि want to tell everyone who is sitting in the chairs. और जितने लोग कुर्सी में बैठे सभी लोग से बोलता हूं, My God says, मेरा परमेश्वर कहता you है, are not your own. तुम अपने नहीं हो। If you have got guts, please read that portion again. यदि आपको हिम्मत है तो उस भाग को निकाल कर पढ़िए। If you have got guts, please read that. यदि आपको हिम्मत है तो You निकाल are कर not पढ़िए। your own. तुम अपने नहीं हो। You are not your own. तुम अपने नहीं हो। You are not your own. तुम अपने नहीं हो। Then to whom you belong? तो फिर किसके है? You married fellow, you say, I belong to my wife. आप विवाहित व्यक्ति बोलिए कि मैं मेरा पत्नी का हूं। Silly statement. बहुत ही मूर्खता है ये। The person who doesn't use the Bible, he can say that. जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता वो ऐसे बोल पाएगा। And you say, और आप बोलते I हैं, belong to my beloved husband. मैं मेरा पति का नहीं हूं। What is his beloved husband? ये प्रिय पति क्या है? What is his beloved husband? ये प्रिय पति क्या है? I want to tell you, मैं आपको बोलता हूं I want to tell the word of God. Yesterday you received it. और मैं परमेश्वर का वचन ये बोलता हूं कि Jacob's heart. याकूब का हृदय, Jacob's heart. याकूब का हृदय, Where was it? Where was it? याकूब का मन कहाँ लगा रहा? Where was it? Where was it? Jacob's heart. याकूब का मन। Children of God. हे परमेश्वर के बच्चे Members of Church of Gandhidham. और कलीस इस चर्चा Don't do this mistake which other people are doing that. दूसरे लोगों ने किया वो गलती आप लोग ना करें। Jacob's heart was. याकूब का मन, Jacob's heart was. याकूब का हृदय। What is that man? Jacob's heart was. Genesis 14. 44:31. Genesis. Gentlemen, yesterday you didn't come. Please read that. याकूब Genesis 44:31. और उत्पत्ति 44:31। Madam, you didn't come yesterday. Please read that. 44. 44:30। If the boy is not with us, is it this word? Whose life is closely bound up with the boy's life. उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। You do everything like the worldly people. आप दुनिया के लोगों के समान सब कुछ करते हैं You do everything like the ungodly people. और अभक्ति वाले लोगों के समान सब कुछ करते You हैं practice everything like the unconverted people. और जिन्होंने मन नहीं फिरा ऐसे लोगों के समान आप करते हो। You behave and do everything as if you are ungodly people, unconverted people going to hell. और आप ऐसे अभक्ति के लोगों के समान और जिन्होंने मन परिवर्तन नहीं हुआ उनके समान करते हो। If you ever hold the word of God in your hand, यदि आप परमेश्वर के वचन को हाथ में थामे रखते if हो, you say you are a born again child of God, यदि आप बोलेंगे कि मैंने मन फिराया व्यक्ति your हूं, attitude should change. आपका स्वभाव बदलना चाहिए। Your attitude should change. आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। What you will say? आप क्या बोलेंगे? I have a father. मेरे लिए एक पिता है। Where is he? वो कहाँ है? He is in heaven. वो स्वर्ग में है। What you have to do? आपको क्या करना I चाहिए? have to do the will of my father. मुझे मेरा परमेश्वर की इच्छा को पूरा Off करना and है। on, off and on. बारंबार Jesus repeated this statement. यीशु ने बारंबार बोला I है, have to do the will of my father. मुझे मेरा पिता का I इच्छा को have to पूरा do करना the है। will of my मेरे father. पिता की मर्जी को पूरा करना And you है। want to do the will of your wife. आप आपकी पत्नी की मर्जी को पूरा करना What a चाहते हो। poor show this is. देखिए कितना दयनीय अवस्था And you है। want to dance according to the singing of your husband. आपके पति का गाने के अनुसार आप नाचने के लिए What a चाहते हो। foolish thing it is. कितनी मूर्खता है ये। I am मैं God's. परमेश्वर का हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am. मैं Open your mouth and say that, man. I am मैं God's. परमेश्वर का हूँ। I am मैं
God's. परमेश्वर का हूँ, I am मैं परमेश्वर का हूँ, God's. परमेश्वर का हूँ। I have to do the will of my Father. मुझे मेरा परमेश्वर की मर्जी को पूरा This करना है। silly fellow, इस मूर्ख व्यक्ति, this crooked fellow, इस टेढ़ा व्यक्ति, is experiencing what he sowed. और जो कुछ उसने बोया उसको अभी अनुभव कर रहा है। Once again, जो कुछ उसने बोया अभी उसको अनुभव कर रहा will है। you please say that? आप बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे, Whosoever soweth, so shall you reap. जैसे What's- हम बोते हैं वैसे हम काटेंगे। Is it in your Bible? आपके बाइबल में लिखा है, Open your mouth and say, man, whatsoever man soweth. जो कोई मनुष्य बोता है, I am so sorry to say, मुझे बोलने में बहुत ही दुख होता some है, of you are reaping what you have already sown. आप में से कुछ लोग अभी काट रहे जो पहले आपने बोया था। And my master says, और मेरा स्वामी कहता है, you have not yet completely reaped what you sowed. और पूरी तरह से अभी तक आपने काटा नहीं जो आपने बोया था, Something more is left. और कुछ बाकी है। Before you leave this world, आज दुनिया छोड़ने से पहले you may have to reap what you have already sowed. आपको शायद काटना पड़ेगा जो आपने पहले बोया था। Hallelujah. हालेलुया। Come back to Joseph. वापस यूसुफ के पास आएंगे। Joseph had a plan. But God had a plan for Joseph. परमेश्वर को यूसुफ के बारे में योजना था, One of the greatest plans in the Bible. और परमेश्वर का वचन में सबसे महान एक योजना हम देखते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। A great plan of God एक परमेश्वर का बड़ा मनुष्य, to fulfill what God had promised Abraham. जो कुछ परमेश्वर ने इब्राहिम को वायदा और प्रतिज्ञा किया What था। God said, परमेश्वर क्या बोला? he that blesses you, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा I will bless him. मैं उनको आशीष दूंगा। One thing, he that blesses you, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा I will bless him. मैं उनको आशीष दूंगा। Number 2, दूसरा, you will be a source of blessing to others. और तुम दूसरों के लिए आशीष का सोता बन जाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Make very sure इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, you can't live for yourself. आप अपने खुद के लिए जी नहीं सकोगे, But the devil is deceiving you. लेकिन शैतान आपको धोखा देता है। Other Pentecostals are deceiving you. दूसरे पेंतिकोस वाले आपको धोखा देते हैं, And the people around you are deceiving you in a mighty way. और आपके आजू बाजू के लोग आपको बहुत ही विचित्र रीति You से are not to live for yourself. आपको अपने लिए नहीं जीना है, You are not to live for yourself. आपको अपने लिए ना जीना है। You are saved in order to live for others. आप उद्धार पा चुके हो क्योंकि आपको दूसरे के लिए जीना You है। are saved in order to live for others. आप इसलिए बच गए हो कि आपको दूसरे के लिए जीना है। Any daydreaming, यदि दिन में हम ऐसे I स्वप्न want to देखेंगे, live for myself. मैं अपने लिए जीना है, God wants to say very definitely, परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट बोलना चाहता है। forget that. उसको भूल जाइए, Forget that. इन विषयों को भूले, Forget that. उस विषय को भूल You कर are a follower of Jesus. आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। You are a follower of Jesus. आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, You have to follow the footsteps of Jesus. और यीशु मसीह के उस मार्ग में आपको उस पथों में You चलना है, have to follow the footsteps of Jesus. और यीशु मसीह के उस पथों पर चलना है। Otherwise, नहीं तो my Father will not be able to open the heaven blessings of heaven. और मेरा परमेश्वर स्वर्ग के आशीषों को आपको खोलकर नहीं दे पाएगा। And in order to make this man pure, और इस व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए, the process of purification was very severe. और उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत ही गंभीर था। Where is it? Where is it? वो कहाँ लिखा है? The book of Psalms. भजन संहिता, In the book of Psalms, भजन संहिता 105. 105, What are those three verses? 17, 18, 19. 105. 105 भजन संहिता, Read louder. 17, 18, 19. Read louder. 17, 18, 19. 18, 19. 19. Please open your Bibles. आपके बाइबल को खोल कर पढ़े। Lift your heads. Read the Bible. लोगों ने उसके Read louder. लोहे की सांकलों Read louder. यहोवा की बात Read louder. ప్రాణము బాధించెను అతడు చెప్పిన What was the process of purification? और उस शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या था? By applying Dove soap, डव सोप लगाने से किया, Dove cream, डव क्रीम and Dove powder, और डव पाउडर लगाकर, and a beautiful kiss. और एक अच्छा एक चुंबन भी दिया। Is that right? ऐसा था क्या? Is that right? You ऐसा want हो? our pastor should use this.
आप ऐसे चाहते कि पादरी ऐसा इस्तेमाल In करे? his absence, Brother Matthew Varghese should use this. उनकी गैरहाजिरी में वर्गीस संगल ऐसा उपयोग And करे in his absence, Mr. Matthew should use this. और उनकी गैरहाजिरी में ब्रदर मैथ्यू ऐसा यूज करे। Any pastor कोई भी पादरी who uses the dough items ऐसे डव के वस्तुओं को उपयोग is करते one of थे। the best pastors in the world दुनिया में सबसे अच्छे पास्टर है, to take you down through hell. आपको नरक में लेकर जाने के लिए वो He is the माध्यम है। best pastor to receive your tithes also. और आपके दशवांश लेने के लिए भी अच्छे पास्टर है वो, So nice. बहुत अच्छे हैं। What a beautiful sermon he is making there. कितना अच्छा प्रचार करते हैं। Oh no, nothing to berate us, nothing to rub us, nothing to rub us. हमें घिसने के लिए कुछ भी नहीं, So luxurious. इतना आरामदायक है। Just to go and sit there. वहां जाकर बैठे The miniskirt ladies will come and sing sweet songs. और मिनी स्कर्ट पहना हुआ लड़कियों आकर अच्छे गीतों को गाएंगे। So nice to hear there. सुनने में कितना अच्छा और मजा आता And है। afterwards he will come. और उसके बाद The pastor will come say, पास्टर आकर कहेंगे, Jesus is healing you. यीशु तुम्हें चंगा करता है, Jesus is blessing you. यीशु तुम्हें आशीष देता है। What a beautiful sermon it is. कितना सुंदर प्रचार Come है। on, we will leave this church and go there. चलो हम इस चर्च को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। Unless God rubs you. जब तक परमेश्वर आपको नहीं घिसेगा। Second chapter of Acts of the Apostles says, और प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय में लिखा है, when the Holy Spirit filled Peter preached. और पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस ने जब प्रचार किया, When the Holy Spirit anointed Peter preached, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया पतरस ने जब प्रचार किया, en masse the people cried. सभी लोगों ने मिलकर चिल्लाने लगे। What did they say? और वो क्या बोलने लगे, Brothers, हे भाइयों, what shall we do? हम क्या करें? And before that, what made them to ask this question? और उनको ये पूछने के लिए कौन सी बात मजबूर किया? They were, read that Englishman, read that. They were, the second chapter, which verse? 37. 37. 37. They were They were cut to the heart. They were They were Cut to cut the to the heart. cut to the heart. सुनने वाले का हृदय छिद गया। Telugu? It is not in Telugu. హృదయంలో చొచ్చుకొని హృదయములో చొచ్చుకొని నొచ్చుకొని മലയാളം ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ട്? കുത്തുകൊണ്ടു. അതൊക്കെ എന്നും ഞങ്ങൾ കുത്തല്ലേ കിട്ടുന്നത്? എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുത്ത് പ്രൈസ് എന്നും കുത്തുക്കുള്ള കാരണം എന്താ? നീ ഇതിന് ശരിയായിട്ടില്ല, നീ ശരിയാകാനുണ്ട്. യെസ്, തമിഴ് മേ இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவளாகி ഹൃദയത്തിലെ കുത്തപ്പെട്ടവர்களായി. हालेलुया, समझ में आता है? हृदयത്തിലെ तो मेरे ओर ही मारता है. He is hitting me. Is it right? वो मेरे और ही मारता है। He is hitting me or he is hitting him. Every sermon should hit you. हर एक परमेश्वर के दास आपको मारना चाहिए। Every word of God should hit you. परमेश्वर का हर एक वचन आपको मारना चाहिए। Otherwise, मारना नहीं बेटा, क्या बोलते हैं? मारना दूसरा है, हिटिंग दूसरा है. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। And you must say, और आप बोलना this चाहिए, fellow is targeting me only today. ये व्यक्ति हमेशा मुझे ही निशान बना, This fellow is targeting me only. हमेशा मुझे ही निशाना बनाता And है he has no other person to hit. और कोई व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं है। Unless you are hit, you will not be hurt. और जब तक आपका हृदय छिदेगा नहीं तब तक आपको घायल ना Unless you होगा। are hurt, you won't change. और जब तक आपको चोट नहीं पहुंचेगा आप बदल नहीं जाओगे। Unless you are changed, God can use you. और जब तक आप नहीं बदलोगे परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If God has to use you, यदि परमेश्वर आपको उपयोग में लेना हो, all these extra things should be cut off. ये सारे अन्य बातों कट हो जाना चाहिए। She is such a nice fellow. ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, He committed no sin. उसने कोई पाप नहीं किया। According to my understanding, और मेरे समझ के अनुसार this Joseph did not commit any sin. इस यूसुफ ने कोई भी पाप नहीं किया था। He did not have this deceitfulness of his father. और पिता का वो टेढ़ापन और धोखेबाजी उसमें नहीं था। Did he have? Has Yeah. he? No. नहीं था।
His father was a deceit man. और उसका पिता एक धोखेबाज था किधर भी हो, he deceived his father. और उस अपने पिता को धोखा He दिया deceived his brother. और भाइयों को धोखा दिया He deceived his father-in-law. और उसके ससुर को धोखा दिया। Only motto was, उसका एक ही उद्देश्य I था, must become great. मैं महान होना है I must amass wealth और मुझे बहुत ही धन होना है, by hook or crook. कैसे भी मुझे धन बनाना है। And I want to tell you, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, my God loves just and right. मेरा परमेश्वर सही और न्यायी व्यक्ति को चाहता है। My God likes just and right. मेरा परमेश्वर सही और न्यायी व्यक्ति को चाहता है। Whoever you may be, चाहे आप कोई भी हो, whoever he may be, चाहे वो कोई भी हो, my God will not tolerate your unjust mothers. मेरा परमेश्वर आपके अन्याय की रीतियों को कभी भी नहीं चाहता है। God will not tolerate all the ways that you are doing that. जो कुछ काम आप करते परमेश्वर उसको सहन नहीं करेगा। I want to tell you, मैं आपको बोलता हूँ, before he puts you into the refining fire, और आपको उस आग की भट्टी में डालने से पहले come to the word of God परमेश्वर के वचन में आ जाए and see that all ungodly things are taken away from your life. और आपके जीवन में से सारे अभक्ति के कामों को निकाल दे। इस बात को आप पक्का कर लीजिए। Once again, आपके जीवन में से जो सारे अभक्ति के काम है उसको निकालने के whatever लिए, contrary to the word of God, और जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में है, open your mouth and say that. Whatever contrary to the word of God. जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में है। आपका भाषा ये लोग समझते नहीं, ब्रदर, रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखो, और ये- जो कुछ परमेश्वर के ये वचन डैनियल के राय विरोध में है 3 दिन उसको का निकाल उपवास दे। करके आया। डैनियल राय भी बोल सकते हैं, whatever is contrary to the word of God. जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में है उसको निकाले। बोलिए। थोड़ा स्त्रियों बोलते हैं लेकिन पुरुषों का मुंह तो बंद हो गया। Once again, और जो कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में है उन सारे विषयों को निकाल दे। विजय की भी अभी बोलना पड़ता है। माइक दे दो भैया। Praise God. Praise God. That fellow doesn't listen. That fellow is indifferent. That fellow is indifferent. Hallelujah. 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 This church should come back to God, ये कलीसिया परमेश्वर की ओर मोड़ कर आ जाए, to the will of God. परमेश्वर की मर्जी के लिए सौंप दे। Whatever God says, जो कुछ परमेश्वर बोलेगा you should obey. आप उसको मानना पड़ेगा। Whatever God says, जो कुछ परमेश्वर बोलेगा you ought to obey. आपको जरूर मानना पड़ेगा। Not whatever you like to obey. जो कुछ आप चाहते हो वो नहीं, Whatever God says, जो कुछ परमेश्वर बोलता you है should obey, आपको मानना and जरूरी you है ought to obey. और जरूर उसको मानना है। Otherwise, there will be no entry into the kingdom of God. नहीं तो परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। How did he prove him? उसने अपने आप को कैसे साबित किया? How did he? That man, Psalms 115. Read once again. They bruise his feet. They bruise his feet. उसके पैरों को बेड़ियों में डालकर उससे दुख दिया। They bruise his feet. उसके पैरों में बेड़ियों डालकर उससे दुख दिया। Those fellows who are sitting, Moses को मौका मिल गया, पास्टर पीछे चला गया, मैं बकवास करूं। They bruise his feet और उसकी पैर में बेड़ियों डालकर उससे दुख with दिया। shackles. और लोहे के सांकलों में, From your Bible you read it. వారి From your Bible you read it. వారి సంఖ్యల చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించిరి, ఇనుము అతని To say in a different way, उसको अलग तरीके से बोलूं तो this man was imprisoned. इस व्यक्ति को बंदी गृह में डाला गया। Who is this man? ये मनुष्य कौन है? Who is this man? ये मनुष्य कौन है? Joseph. वो यूसुफ है। Joseph was imprisoned. यूसुफ बंदी गृह में डाला गया। And number 2, और दूसरा, his neck was put in irons. और उसके गर्दन को लोहे से बांधा गया। Brothers, भाइयों, you may be understanding. आप ऐसे सोच रहे होंगे This is some unrighteousness. ये तो कोई अधार्मिकता की बात है। It is some unrighteousness taking place. ये कुछ अधार्मिकता का बात हो रहा है। Probably the Spirit of God is talking to you. परमेश्वर की आत्मा शायद आपसे बात कर रहा है। To certain individuals, the Spirit of God is moving. कुछ विशेष व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। They put his feet in their shackles. और उसको पैरों को बेड़ियों से बांध दिया। Number 2,
और दूसरा, here they put the irons in his heads. और लोहे की सांकलों से जकड़ा गया Defamed, और बदनाम हुआ, defamed, बदनाम किया गया insulted, और अपमान हुआ, beaten, मारा उसको persecuted. और उपद्रव किया। These are all the process of purification for the servant of God. और परमेश्वर का लोगों के लिए इस प्रकार से एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है। Probably the Lord has not done that in your life so far. शायद परमेश्वर ने अभी तक आपके जीवन में ऐसा नहीं किया होगा, In this church also the Lord has not done that. और इस कलीसिया में भी परमेश्वर ऐसा नहीं किया होगा। Probably the days are due for you. ऐसा लगता है कि दिन बहुत ही नजदीक है। These things may happen to you. ये संभव आपके जीवन में आ जाएगा, These things may happen to me also. और इन विषय मेरे जीवन में भी शायद आ जाएगा। If you will stand firm, यदि हम पक्का खड़ा रहेंगे, you will be purified. आप शुद्ध हो जाएंगे, You will be purified. आप शुद्ध किए जाएंगे। Madam, who you are suffering? आप क्यों दुख उठाते हो? Brother, who you are suffering? भाई आप क्यों दुख उठाते God हो? wants to purify you. परमेश्वर आपको शुद्ध करना There चाहता are है। some problems in you. आपके अंदर कुछ समस्या है, God wants to use you. परमेश्वर आपको उपयोग में लेके आना Not चाहता to है, use you. आपको इस्तेमाल करने के लिए। This filth should be taken away from you. आपके अंदर से ये गंदगी निकाला जाना चाहिए। What was that in Joseph's place? यूसुफ के अंदर क्या था? It was tale bearing, वो था backbiting, और चुगली करना, बुराई करना, bringing bad report about his brothers, अपने भाइयों के बारे में बुराई का समाचार bringing पहुंचाना, bad reports about his brothers. अपने भाइयों के बारे में बुराइयों का समाचार In पहुंचाना। the childhood, और बचपन में God had told you about your future plan, about his future plan. और उसके भविष्य के विषयों के बारे में बताया था। You ought to submit yourself to the plan of God. आप परमेश्वर के मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। Not only this problems you may be having, और जो कुछ समस्या जो है वही उतना ही you may नहीं, be having something other also. आपको कुछ दूसरे समस्या भी होता है। Worldliness, दुनियादारी, worldliness, दुनियादारी, worldliness, లోకానుసారము worldliness. दुनियादारी। The Pentecostal church is completely filled with that. पेंतिकोस मंडली पूरा इससे भरा हुआ है, Everybody is lost. और सभी लोग इसमें खो गए हैं। Everybody is lost. सभी लोग इसमें खो गए हैं। Whatever you plan, जो कुछ आप योजना बनाते हो, whatever you think, जो कुछ आप सोचते हैं, whatever you do, जो कुछ आप करते हो, you want to be like others. आप दूसरों के समान बनने के लिए चाहते This हो। woman went for a Pentecostal marriage in Andhra Pradesh. ये बहन पेंतिकोस का एक शादी में आंध्र प्रदेश में गई थी। Was it Pentecostal marriage? Pentecostal marriage? How excellent it was. Will my Jesus be pleased by that marriage? कि मेरा प्रभु उस शादी से प्रसन्न होगा। Praise the Lord. Some time back, कुछ समय के पहले that man went with all his family people. वो भाई पूरा परिवार के साथ गए थे। Is that right? मोहन राव, अच्छा हो गया, तुमने अच्छा काम किया है। वो फीवा वो भी नहीं किया है। और हानो को तो पूरा परिवार को छोटा बच्चा के साथ ही बंडल बनाकर देने वाला। Praise the Lord. And Mr. Mohan Rao is here. भाई मोहन राव यहाँ बैठे हैं। He went and witnessed one Pentecostal marriage. एक पेंतिकोस शादी में वो भाग लिए थे। Will my Jesus accept that type of marriage? मेरा परमेश्वर उस Louder. प्रकार की शादी को स्वीकार Louder. करेगा क्या? Louder. No. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I never witnessed that marriage. मैं कभी उस शादी में, That's I don't want to go for marriages. इसलिए मैं शादियों में जाना पसंद नहीं करता हूँ। The women's fashion, और स्त्रियों का the फैशन, women's dresses. और स्त्रियों का वस्त्र, Oh, what's called? What is a majestic appearance और इतना ऐसा उनका आकर्षित वस्त्र, in the marriage parties? और शादी की पार्टियों में। These ladies are not those ladies. और ये बहनों यहाँ पर बैठे ऐसे नहीं है, They are queens. वो वहां पर रानियां बन जाती है, The daughters of Pharaoh, और फिरौन की पुत्रियां बन जाते हैं, or the daughters of what's called Herod. हीरोद की पुत्री के समान। No. God wants to purify you. परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करना चाहिए। The word of God says परमेश्वर का वचन योग कहता there है, is something back left for you to be purified. आपके जीवन में और भी शुद्ध होने के लिए कुछ बाकी है। The word of God, परमेश्वर के वचन में till what he foretold came to pass. कि जब तक जो उसकी बात पूरी ना हो जाए, Till what God foretold came to pass. जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। Will you please say praise the Lord? If you are born again,
यदि आपने नया जन्म पाया है, God has a plan for you. परमेश्वर को आपके बारे में ये योजना है। If you are a Holy Spirit fellow, यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, God has a plan for you. परमेश्वर को आपके बारे में योजना You है। can't go out here and there. आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं। God will see, He will pin you down. परमेश्वर आपको पकड़ लेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. God will pin you down. परमेश्वर आपको पकड़ कर नीचे उतार All the देगा। movements He will stop. आपके सारे हलन चलन को परमेश्वर बंद कर देगा। All your plans God will smash. परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं को नाश कर देगा। In the Bible, we find one word. बाइबल में एक वचन को हम देखते हैं, Whatever God does, जो कुछ परमेश्वर करता है, He does for the fulfillment of His will. For the fulfillment of His will. उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर उन बातों को करता है। Whatever God does. जो कुछ परमेश्वर करता So है, don't run away. इसलिए भागना नहीं। Especially those who are sitting in the chairs. खास करके जो कुर्सी पर बैठे हैं, In Malayalam they say, मलयालम में बोलते हैं, നീളമായി കയറിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ? അങ്ങനെയാ പറയുന്നേ? അയച്ചിട്ട് ഇല്ല, നീളമായി. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? താവ് തൻ്റെ കയർ നീളമായിട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ ശരിക്കും മടങ്ങി വന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറ്റി നിന്നെ ടൈറ്റിൽ പണിതെടുക്കും. അവൻ്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിച്ചെടുക്കണം. അതിനു മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന മുൻപ് മടങ്ങി വാ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. മടങ്ങി വാ. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നീ മടങ്ങി വാ. അല്ല എങ്കിൽ ഈ നീളമായിട്ടിരിക്കുന്ന കയറിനെ കർത്താവ് വലിച്ചു പിടിക്കും. നിന്നെ ആക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ആക്കി തീർക്കും. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Joseph is here. यूसुफ यहाँ है Till what he foretold came to pass. कि जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई। Number 2, दूसरे, the word of the Lord proved him true. तब यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता The रहा। word of the Lord proved him true. यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। యెహోవా వాక్కు అతన్ని పరిశోధించుచుండెను. तू बराबर पढ़. యెహోవా వాక్కు थोड़ा सिर तो सीधा रख. యెహోవా వాక్కు అతనిని పరిశోధించుచుండెను. इतना अच्छा नहीं है. कसौटी. कसौटी पर कसता। कसौटी पर वो क्या चीज है? आपको समझ में आता है? हाँ। अब बोलो क्या बोला है? कसौटी पर कसता है. ये बस आप हिंदी में बोल दो. उसकी बहुत ही भारी परीक्षा हुआ। भारी परीक्षा हुआ. प्रभु परीक्षा करता है. प्रभु परीक्षा करता है. प्रभु परीक्षा करता है. Don't murmur. Don't murmur. कुड़कुड़ाना नहीं। Joseph did not murmur. यूसुफ ने नहीं कुड़कुड़ाया, He bore it. उसने सहन किया। He bore it. उसने सहन किया। He bore it. उसने सहन किया। And after he bore it, और सहन करने के बाद and Job says, अय्यूब बोलता है, after he tries me, मुझे जांचने के बाद, after he tries me, वो मुझे परखने के बाद। your Bible says, why can't you read those Bibles? Job says, when he tries me, जब वो मुझे परखता है, after he tries me, मेरे परखने के बाद। जोर से पढ़ो, after he tries me. శోధన చేసిన Job శేషం. 23:10. Job 23:10. अय्यूब All 23 का 10वां वचन। of you read your Bibles. ഞാൻ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരും. When he has tested me, నన్ను శోధించి after he has tested me, నన్ను శోధించిన తరువాత after he has tested me, say the rest. പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരും. Say the rest. నేను సువర్ణము వలె కనబడుతున్నాను. Louder. പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരും. Hallelujah. The kundan is pure or gold is pure? Kundan is pure or gold is pure? सोना चोखा है या कुंदन चोखा होता है? Louder. Which is pure? Kundan. In Malayalam we say tangam and pon. What is pure? What is pure? And this lady doesn't know about the gold also. Tangam is pure. That's why we call tangame.
and she becomes Ponname. Downgraded. A downgraded thing is Ponname. I'm so glad we are not putting Tangame and Ponname. That is the name of the past. Don't put Tangame and Ponname. They are human beings. They are flesh like us. Kundan store nahi hai bhaiya. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God wants to purify this church. परमेश्वर इस कलीसिया को शुद्ध करने के लिए चाहता है। God wants to purify you. परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है। And before that you say, और उसके पहले आप बोलिए, Lord, I belong to you. हे प्रभु मैं तेरा हूँ। I belong to हे you. प्रभु मैं तेरा हूँ। God, I belong to you. हे प्रभु मैं तेरा हूँ। You belong to me. और तुम मेरे हो। You belong to me. और तुम मेरे हो। Will you please kneel down? क्या आप घुटने में आ जाओगे? You must come to this conclusion. आप इस निर्णय में और नतीजे पे आना चाहिए। Everyone who is right now here, जितने लोग यहाँ पर आज आए हैं, forget your problem. आपके समस्या को भूल जाइए। These are the purifying things in our life. यही हमें शुद्धि करने की सारी प्रक्रिया है। If God put Joseph in the fire of purification, और जब यूसुफ को परमेश्वर ने उस आग में जब शुद्ध करने के लिए रखा, if God has put Joseph into the fire of purification, यदि यूसुफ को परमेश्वर ने उस शुद्ध करने की आग में रखा तो God should put you and me in the fire of purification. और परमेश्वर मुझे और आपको भी उस शुद्ध करने की आग में रखना चाहिए। You, आप, Mr. You, आप a born again man of God, एक नया जन्म पाया मनुष्य, a child of God, हे परमेश्वर के संतान, you ought to be purified. आपको शुद्ध होना जरूरी है। Straighten your heads, सिर को सीधा रखें, open your mouth, मुंह को खोलकर let the word of God deal with you in a mighty way. परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य से आपके जीवन में काम Let करे। the word of God deal with you in a mighty way. परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य रूप से आपसे व्यवहार करे। The hardships, सारे कठिनाई, the sufferings, सारे दुख, the problem you face, जो समस्या आप सामना करते हो, let them be a step for promotion in your spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अवस्था हो जाने A पाए, promotion in your spiritual life. आत्मिक जीवन में पदोन्नति का अवस्था होने पाए। Commit yourself to God. आपके जीवन परमेश्वर के सन्मुख में समर्पण कीजिए। You may say, आप बोलेंगे, I am not such a great sinner. मैं इतना महान या बड़ा पापी तो नहीं I am हूँ, not such a great sinner. मैं इतना महान पापी नहीं हूँ, I am not doing such a great sin in my life. मैं ऐसा बड़ा पाप अपने जीवन में नहीं करता But हूँ। my master wants to say, लेकिन मेरा स्वामी बोलने के लिए चाहता still है, there is filth in you. अभी भी आपके अंदर गंदगी पड़ा है, Still there is filth in you. अभी भी आपके अंदर मैल पड़ा है, Still there is a dirt in you, आपके अंदर अभी भी गंदगी का अवस्था पड़ा है, which can't be washed by water. जो पानी के द्वारा धोया नहीं जा Which सकता है, can't be washed by water. पानी से धोकर उसको निकाल नहीं सकते हैं, Which can't be cleaned by normal way. और उसको साधारण तौर पर उसको निकाल नहीं पाएंगे, Which can't be cleaned by normal way. और उसको साधारण तौर पर निकाल नहीं पाएंगे। I have better plans for you. मुझे तेरे बारे में बहुत ही उत्तम योजना Gentlemen, है, open your mouth. इसलिए आपका मुंह I have खोलिए, better plans for you. तुम्हारे लिए उत्तम योजना है, In order for me to make use of you. और आपको उपयोग करने के लिए, In order that I may use you. ताकि मैं आपको उपयोग करूं For my glory. मेरी महिमा के लिए, For my glory. मेरा महिमा के लिए, For the blessing of others. और दूसरों की आशीष के लिए, You ought to be sanctified. और तुम पवित्र होना जरूरी You है, ought to be purified. और तुम शुद्ध होना जरूरी है। Yield yourself. अपने आप को समर्पण करो, Yield yourself. अपने आप को सौंप दीजिए, Yield yourself. अपने आप को सौंप दीजिए, Let me purify you. और शुद्ध हो जाइए, Let me purify you. और बोलिए कि मुझे शुद्ध करो, Let me purify you. और शुद्ध हो जाए। I want to remove your filth. तुम्हारी गंदगी में निकालना चाहता हूँ, I want to remove your insubordination. और तुम्हारे आज्ञा न मानना उस स्वभाव को निकालना I चाहता want हूँ, to remove that carnal filth. और उस शारीरिक गंदगी निकालना चाहता हूँ। I want to remove that carnal filth from you. वो शारीरिक गंदगी को शरीर में से निकालने के लिए चाहता है, The hidden sinful nature. The hidden sinful nature. छिपा हुआ पाप का The स्वभाव, hidden sinful nature. छिपा हुआ पाप का स्वभाव, For others you are so good. और दूसरों के सामने बहुत अच्छे For हैं, others you are so good. दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे हैं, But inside you are not right. लेकिन अंदर आप सही नहीं हो, Inside you are not pure. अंदर आप शुद्ध नहीं
नहीं है, I am unable to use you. मैं इसलिए तुम्हें उपयोग नहीं कर I पाता am हूँ, unable to exalt you. इसलिए मैं तुम्हें ऊंचा नहीं कर सकता हूँ। Yield yourself. अपने आप को सौंप दीजिए, Yield yourself. अपने आप को सौंपिए। Every one of you. सभी लोग, Every one of you. हर एक व्यक्ति Submit yourself to God. परमेश्वर के सन्मुख में God समर्पित does करें। always the right things. परमेश्वर हमेशा सही काम करता है, God does always good things. परमेश्वर हमेशा अच्छे बातों करता God है, does always things for your good. परमेश्वर हमेशा आपकी भलाई के लिए काम God करता है, always does things for for His glory. परमेश्वर सब कुछ अपनी महिमा के लिए परमेश्वर करता है। Glory. Open your mouth and say. Open your mouth. Open your mouth. मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। युरडवशं प्रभुरबालवरव जरकदरडवश उडलडवशं प्रभुरबलवा जरकदरडवरबलवश उरंबरबलबरबल भुजलकदलकदल दवशं प्रभुरभजनकदलडवश भुजराजरा जरकदलदल शंप्रभीनबालबरबलवशं प्रभुजनकदलवश हालेलुया 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 उजारो जल 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 सौशब्र पर बहुन बर बर जलक दल विषय उडालाड शंब्र बर 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 अर्पण करते हुए तुझको आत्मा प्राण देवी अर्पण करते हुए तुझको आत्मा प्राण देवी रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की भी हमारी हृदय में सदाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब साथ अर्पण करते तुझको आत्मा प्राण देवी अर्पण करते तुझको आत्मा प्राण देवी रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की बेटी हमारी Close your eyes. आंखों को बंद करें। Are you able to say, क्या आप बोल सकेंगे, I am His मैं उसका हूँ and He is mine? और वो मेरा है? All those who want to yield their lives, open your mouth and say, जितने लोग अपना जीवन को सौंपने के लिए चाहते, अपना मुंह खोलकर बोलिए, I am His. मैं उसका हूँ He is mine. और वो मेरा है। Jesus is mine. यीशु मेरा है, I belong to Jesus. मैं यीशु का हूँ, I belong to Jesus. मैं यीशु का हूँ। Joseph was purified यूसुफ शुद्ध किया गया and used mightily for God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही भारी For रीति the से preservation of his father's family. और अपने पिता के घराने के लोगों के संरक्षण And करने के लिए the preservation of a huge number of people. और बहुत सारे लोगों का संरक्षण के लिए, However good he may be, चाहे कितना भी अच्छा हो, God had to purify him. परमेश्वर उसको शुद्ध करना पड़ा। Will you please open your mouth? आपके मुंह को खोलेंगे। You belong to God. आप परमेश्वर के हो, You belong to God. आप परमेश्वर के हैं। You belong, young man, you belong to God. आप परमेश्वर के हो, You belong to God. आप परमेश्वर के हो। Will you not yield yourself? क्या आपने जीवन को आप नहीं सौंपोगे? God wants to make you a source of blessing to others. परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का सोता बनाने के लिए चाहता है। Praise the Lord. Pray. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे जीवित और प्रभावशाली वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं।
तेरे वचन के भेद के विषय को और मर्मों को तेरे दास के मुख में से सुनने के लिए दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी योजना हमारे बारे में बहुत ही महान और विशाल है प्रभु। उसको समझने के लिए तू हमारी आंखों को तू खोल दे प्रभु। हालेलुया। हमारी समझ को खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यूसुफ को इस अवस्था में पहुंचाने के लिए परमेश्वर उसको बहुत सारे दुख से तकलीफ से गुजरना पड़ा और हमेशा वो कसौटी पर कसता रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतने भयानक परिस्थिति के बीच में परमेश्वर तूने उसको शुद्ध किया और उसको परमेश्वर तेरी योजना उसके जीवन में पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर हमें यह सीख मिल रहा है कि हमें तू पवित्र करने के लिए और हमें तू शुद्ध करने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को आज इस वचन के सामने समर्पण करते हैं, इसके लिए हमारे जीवन को सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सुना वचन को सुनकर बलवा करने वाले नहीं, लेकिन सुना वचन को सुनकर आज्ञाकारी बनकर मानने के लिए तो मैं सहायता कर। इन दिनों में परमेश्वर तेरा सन्मुख में नम्र और दीन होते हुए तेरी योजना हमारे जीवन में पूरा होने के हमारे जीवन को सौंपते हैं। मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इस प्रकार बोलने के लिए तो हमें सहायता कर लॉर्ड। हमारे जीवन में वास्तव में ये हमारा अनुभव होने के लिए प्रभु तू सहायता कर। हालेलुया। हर प्रकार की चतुराई से, हर प्रकार की टेढ़ेपन से, परमेश्वर बुराई बोलने के स्वभाव से हमें बचाकर तेरा वचन के अनुरूप जीने के लिए तो हमें सहायता कर। आज के मीटिंग को तूने आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। तेरे लहू ने दास को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी सभी अपने घर जाने के समय तू साथों संग रहे। इन पूरा सप्ताह इन वचनों के द्वारा हम बल पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो गण का पिता। Amen. May the grace of our Lord Jesus, the love of the Father, and the communion of the Holy Ghost be with all of us forever and ever. Amen. May God bless you. आज शाम को 4 o'clock गर्ल्स मीटिंग होगा। कौन सी मीटिंग?